सैर भी करनी है आपने, ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। तमाम लोग आपको इस वक्त तकरीबन रात की पहर ऐसा हो रहा है कि सैरी का टाइम ही, और ये सब आपको सैर दिखाई दे रहे हैं, सब लोग एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अगर हम आएंगे तो आपको मुख्तलिफ स्टॉल दिखाते हैं जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। आप खाने पीने की अशिया, स्नैक्स, ईच एंड एवरीथिंग, ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ है। और तो और यहाँ पे जिन लोगों ने पान खाना है तो पान भी यहाँ पर मौजूद है, और थोड़े यहाँ पर हर चीज़ यहाँ पर रखी गई है। ये आप देख सकते हैं अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ आ रही है, विजिट कर रही है, खाना पीना इन सब का चल रहा है। डिफरेंट खाने आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ आपको आइसक्रीम भी अवेलेबल है, फ्रेंच फ्राइज भी अवेलेबल है। और अगर यहाँ से हम चलते हैं आगे तो ड्रिंक्स, हलीम और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ पर मैसर आएंगी। अगर आप यहाँ पर आएंगे, लोग आपको यहाँ दिखाएंगे तो सारे लोग आपको खाते पीते हुए इंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। एक बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ बचत एक्सपो का विजिट भी किया और बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा वो उठा सकते थे, तो ये फ़ायदा आपके लिए भी। आप भी आए, कल आखिरी दिन है, यहाँ ज़रूर विजिट करें। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ आपको हनी भी अवेलेबल होगा और यहाँ आपको रोस्ट भी अवेलेबल है, तो खाने आपको यहाँ मिले। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस? लोग आ रहे हैं, चल रहा है मामला? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, काम सही है। मकसद है कि जिस मकसद से आए थे वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। हाँ सही है। ये देखिए आप, ये गर्मा गर्म आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या बना रहे हैं भाई आप? ये क्या है, क्या वैसे? फ्राइड राइस है। ये फ्राइड राइस की तैयारी हो रही है यहाँ पे। लोगों को आप देख सकते हैं और डिफरेंट किस्म की चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। फ्राइज के डिफरेंट ब्रांड यहाँ पर हैं। आगे आते हैं तो यहाँ पे बंद कबाब भी आपको मिलेगा, गोलगप्पे, चाट, ईच एंड एवरीथिंग अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको मैसर है। बारबेक्यू खाने का, अगर आपको रोल खाने का मूड है तो के हॉट रोल भी यहाँ पर मौजूद है। सर आप कैसा यहाँ पे आके कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा एटमॉस्फेयर है और बेहतरीन सब माशाल्लाह। इवन फैमिली के साथ आना चाहिए। फैमिली के साथ। और खास तौर पे आपने कुछ खरीदारी की? खरीदारी मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं, बस अब कुछ घर की जो जरूरत की चीज़ें थी वो ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुनासिब रेटों में मिली हैं। तो यानी कि खुश होके जा रहे हैं बचत एक्सपो से अल्हम्दुलिल्लाह। चले, ये सब लोग यहाँ पर खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लोग खाते पीते हुए एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंदर भी चलते हैं, जरा वहाँ की सूरत हाल को दिखाते हैं। टपाल भी यहाँ पर मौजूद है, इतना बड़ा ब्रांड है टपाल फैमिली मिक्सर, और ये फैमिली गाला ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिस जगह भी आप देखेंगे तो आपको फैमिलीज दिखाई देंगी। बचत एक्सपो 2024 का मकसद यही था कि अपनी लोगों को, फैमिलीज को हमने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना है। यहाँ फिर अंदाज आपको दिखाई देगा, अंदाज का ब्रांड खासा बड़ा ब्रांड, और ये अंदाज है बचत एक्सपो का भी। हम अपना एक अंदाज है बदर एक्सपो सॉल्यूशंस का, और जितने भी लोग जेडीसी, ऑनरेबल गवर्नर, इन सब लोग यहाँ पर जुड़े, सबका एक अंदाज दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद लोगों की यहाँ पर मौजूद है। और हालांकि अब टाइम ऐसा हुआ है कि तकरीबन ख़त्म होने का टाइम है, तो कल आखिरी दिन है, पहुँचे आप यहाँ पर एक्सपो से एक्सपोजर बचत एक्सपो 2024 सीज़न 3 के डे 2 से नसीम राजपूत आपसे चाहता है इजाज़त। आप ये कह करके आप आएँ और आके इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अल्लाह ने के बाद In 2020, together stakeholders across diverse defense industries. The exhibition offers a platform for G2G, B2G, B2B interactions, joint ventures, and investments in the production sector. A strategic seminar will also be held to facilitate discussion of global challenges within the defense sector. The question of ideas will be held from 1922 November 2024 at Karachi Expo Center.
Assalamu alaikum. My name is Awais Nadeem. I am regional business manager in Fast Cables Limited. Today we are here on second day of IDAS 22. IDAS जो है एक बड़े गैप के बाद हो रहा है 2022 में. इससे पहले 4 साल पहले हुआ था. It's a good occasion where industries can introduce जो लोकली हमारी इंडस्ट्री आर्म्स की प्रोडक्शन कर रही हैं या उससे रिलेवेंट जो इंडस्ट्रीज हैं वो हमारे आर्म्स को सर्व कर रही हैं. हमें पाकिस्तान की इंडस्ट्री को, पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को सर्व कर रही हैं, तो वो यहाँ पे सब मौजूद हैं. फास्ट ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया. फास्ट केबल इज द फर्स्ट ओनली मैन्युफैक्चरर हु हैज सीसीवी लाइन टेक्नोलॉजी. और इसके बाद वी हैव एल्यूमिनियम अलॉय प्लांट. वी आर द फर्स्ट कीमा गोल्ड सर्टिफाइड हियर इन पाकिस्तान एंड वी आल्सो हैव लॉन्च्ड द फर्स्ट तस्दीक एंड आर द फर्स्ट वन हु लॉन्च्ड देयर ऐप इन पाकिस्तान, जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट्स को घर से बाई कर सकते हैं. वी आल्सो लॉन्च द फर्स्ट तस्दीक कि आप जब फास्ट का प्रोडक्ट मार्केट से खरीदें तो आपको रियल क्वालिटी प्रोडक्ट मिले. सो वी क्लेम दैट फास्ट serves you with real quality and we are the manufacturer who has the highest capacity of production. We are manufacturing 33 cables and also we are manufacturing grid जो कि हमने एक import substitution की है और हम उसके जरिए अपने national grids को और जितने हमारे बड़े मेगा पॉक्स हैं उसको एनालाइज कर रहे हैं. तो आप सब लोग जो रेलेवेंट इंडस्ट्री के या रेलेवेंट लोग हैं वो एरियाज को जरूर विजिट करें. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि रियल फेस है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इंडस्ट्री का. थैंक यू. Assalamu alaikum. My name is Heather Hussain and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 2022 and we are launching, which is Pakistan's first international defense magazine. Plus we are giving all sorts of media solutions which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time in Ideas and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you very much. It's 1 p.m. मेरा नाम डॉक्टर निदा है. मैं SSJDC लैब में पैथोलॉजिस्ट वर्क करती हूँ. मेरे वर्दा ली हैं, ये मेरे साथ एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हैं. हम लोग यहाँ पे आज हेल्थ एक्सपो में आए हैं. बहुत अच्छा इनिशिएटिव था बदर वालों की तरफ से. बहुत अच्छा, मतलब डिफरेंट कैटेगरी से हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे हम गैदर हुए हैं और काफ़ी इंफॉर्मेटिव ये रहा है हम लोगों के लिए. अब मैं अपनी लैब के बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ. हम लोगों की लैब JDC फ्री डायग्नोस्टिक लैब है, जहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 से ज़्यादा टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं. इस वक्त हमारी कैपेसिटी है मोर देन 1 लाख टेस्ट करने की पर डे. और हमारे पास जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. जैसे कि जफ़र भाई कहते हैं कि जिसका खून लाल है वो हमारे पास आ सकता है टेस्ट करवाने के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट. अस्सलामुअलैकुम. मेरा नाम फादर कासिम है और मैं CEO हूँ इंडस्ट्री लिंक. इंडस्ट्री लिंक हमारा एक नया वेंचर है, एक
एक आईटी कंपनी है और हमारा वेंचर एक अमेरिकन कंपनी के साथ है, वेस्टिंग हाउस। वेस्टिंग हाउस किसी भी इंट्रोडक्शन आज नहीं, वेस्टिंग हाउस सर्व कर रहा है फॉर मोर देन 100 इयर्स और इस वेस्टिंग हाउस की काफी बड़ी रेंज है एमपी एलपी के अंदर, डाटा ट्रांसफार्मर्स, बसवेज, तो उसकी काफी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। हम IEEE में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं और IEEE में हम वेस्टिंग हाउस को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और IEEE मैं पर्सनली समझता हूँ बड़ा प्रोडक्टिव एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स, मल्टीपल वेंडर्स आते हैं और मस्ट में तरक्की होती है। हम प्रीवियसली IEEE पे पार्टिसिपेट करते रहे हैं अपनी पुरानी कंपनी डाटा सोल्यूशन के साथ। इसका फीडबैक, इसका आउटकम बहुत आउट क्लास है और मैं स्पेशली यहाँ पे बदर एक्सपो वालों को भी जरूर उनका कि वो डेट आउट काफी वर्किंग कर रहे हैं उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब विजिट करें 10 सितंबर 12 सितंबर तक ये एग्जीबिशन हुई, तो हम वहाँ पे आपसे मिलना चाहते हैं, आपको ऑब्जर्व करना चाहते हैं और आपसे आपको अपनी साइड प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जफर अहमद सैयद है। मैं मैनेजर सेल्स और मार्केटिंग हूँ शान इंडस्ट्रीज के में। शान इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था कोई आज से 30 साल पहले कॉन्ट्रैक्टिंग से, और आज माशाल्लाह जो है हमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर को हम सर्व कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के हवाले से। हमने इस 30 साल के सफ़र के अंदर जो है एयर डिवाइसेस से लेके आज अल्हम्दुलिल्लाह AHU एयर हैंडलिंग यूनिट एयर कूल्ड चिलर तक बना रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर बेहतर क्वालिटी प्रोडक्ट, इक्विपमेंट की सप्लाई और उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम गामजन हैं। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि हम आपका कॉपरेट हमारे साथ रहेगा और कॉपरेशन में शान इंडस्ट्रीज वक्त के साथ और ग्रो करेगी
और उसके अंदर जो है हम एक अच्छी सर्विसेज देने के लिए मराइल में से कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। मेरा नाम सैयद असद मशदी है और आई बिलोंग टू मिलिट्री व्हीकल्स पार्ट्स बिजनेस और बेसिकली ये जो ISO है इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल हु जो कि डिफेंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं। एक विंडो पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है थैंक्स टू मैनेजर्स और मैं बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डेपू को जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर दिस लॉन्ग कोविड जो सारी दुनिया ने फेस किया है। और उसके बाद ये एक जब दुनिया में B2B मीटिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी तो मेरा हाल है ये डेपू ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि लोग अपने एंड यूजर्स तक यहाँ पे पाकिस्तान अरेंज कर सके, अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले कर सके और अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सके। सो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने डिस्प्ले भी किया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो है उन्होंने भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है, जो कि बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग पॉइंट है पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए। और साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है दुनिया को कि यस वी आर रेडी, वी आर हेयर टू सर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत कंट्रीब्यूट करती है। सो ये जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया है विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ साइड्स, फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज और फॉर द जितने जो सेल कर रहे थे या अपना इंट्रोड्यूस कर रहे थे या अपने नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने आए थे। सो थैंक्स टू डेपू, थैंक यू वेरी मच। जी हम जो यहाँ पर आए हुए हैं वो जो जूसेस की तरफ से आए हुए हैं। हमारे पास डिफरेंट किस्म के जूसेस हैं जिसके अंदर हमारे पास पैट बॉटल में जूसेस हैं, एनर्जी हमारे पास नेक्टर जूसेस हैं, TSD है हमारे पास, कार्बोनेटेड जूस है, हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है। जो कोल्ड ड्रिंक हमारे पास पाकिस्तानी आजकल ब्रांड आप काफ़ी प्रमोट हो रहे हैं, उसके लिए हमारे पाकिस्तानी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फिर हम केचप्स आ जाती हैं, टेट्रा जूसेस हमारे पास अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ा इवेंट रहा है बदर एक्सपो का जो लास्ट हमने एयर भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, उससे भी अच्छा रिस्पांस मिला था। जो ये यहाँ पर चल रहा है इस टाइम बहुत से बचत बाजार से ही हमने लगाया हुआ है। ऑब्वियसली बात है कि जो आए हैं लोग उनको डिस्काउंट भी देने, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट अवेलेबल वो लगभग अप टू 40% है, 30 to 40% का हमारा डिस्काउंट चला है मार्केट प्राइस से। तो थैंक यू बदर एक्सपो। से यहाँ मवेशी मंडी 2024 जो कराची के एक ज़बरदस्त किस्म के त्यौहार की तरह ही मनाई जाती है और हम सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं, तो जानवर बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए। आपकी पसंद के हर तरह के जानवर जो है वो यहाँ पर दस्तयाब होंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम के तमाम जानवर ये मुख्तलिफ जगहों से आए और लोग यहाँ पहुँच गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद। नेक मोहम्मद, आप कहाँ से आए? मैं कनकोट से आया हूँ। कनकोट से। कितने जानवर लेकर आए? 32 जानवर लेकर के आया हूँ। और वैसे कितने आ चुके हैं अब तक जानवर? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे फर्स्ट गाड़ी जो है दोनों मेरे उतरे हैं। और उसके बाद जो है काफ़ी जानवर आ चुके हैं। नेक मोहम्मद भाई ने पहली गाड़ी आ रही है मवेशी मंडी में, तो नेक काम हुआ है, तो फिर देखे ना आगे इसका रास्ते बनेंगे। नेक मोहम्मद भाई गुड लक, आप जो आए खरीदारी करने के लिए। और ये जो फीस वगैरह रखी गई है सब बेहतरीन है, इंतजाम आपके लिए जो किए गए खुश हैं?
जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक हैं और सिक्योरिटी हर चीज़ जो तैनात किया गया, सब कुछ जो हम पहले ही उतरे हैं, फर्स्ट गाड़ी हमारे उतरे हैं तो इन्होंने सिक्योरिटी दे दिया, रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दिया, उसके अलावा जो बाकी दूसरे सिक्योरिटी निज़ाम थे वो भी ठीक ठाक थे, जो उन्होंने दे दिया सिक्योरिटी हर चीज़। चलें, सिक्योरिटीज़ का मकसद है कि तमाम व्यापारी जो यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए, आपके लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका फराहम करने के लिए आए, वो सब लोग बहुत मुतमईन दिखाई दे रहे हैं कि सिक्योरिटी से लेके तमाम इंतजाम ज़बरदस्त हैं। नेक मोहम्मद भाई, थैंक यू वेरी मच और गुड लक, अल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फर, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। ये सारे आप देख सकते हैं सच चुकी है यहाँ पर मवेशी मंडी। मैंने जैसे कहा ना कि कनकोट से नेक मोहम्मद साहब आए थे और बड़ी तादाद में हम देखें ना तो यहाँ पर लोग जो है वो पहुँचना शुरू हो गए और स्टॉल्स भी यहाँ पे बन गए हैं, पान के केबिन खुल चुके हैं, हर जगह पे आप देखें तो रौनक लौट आई है इस वक्त मंडी में। और ये देखें ये क्या ज़बरदस्त किस्म के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शहजाद जी। शहजाद भाई कहाँ से हैं आप? शेखपुरा से। शेखुपुरा से। तो ये अंदाज़ा करें पंजाब से जानवर पहुँचे हैं, वहाँ आपने कंदकोट देखा और यहाँ पे शेखुपुरा से, कैसा सब अरेंजमेंट वगैरह? खुश, बेहतरीन, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? बस मज़ा आ रहा है, हर साल होने 16-17 साल होने आ रहे हैं। अच्छा, हर साल आते हैं? तो सब बेहतरीन है। कितने जानवर लेकर आए? अच्छी जानवर 36 लेके आए। 36 जानवर लेकर आए। सारे ऐसे ही तगड़े नजर आ रहे हैं? सारे इधर ऐसा तगड़े ने, सारे तोड़ आगे अपने जानवर। अच्छा, सारे भी आपके? आइए तो हमसे बात करते हुए चलते हैं। आपको क्या, आइए हमारे साथ बात करें थोड़ा सा। ये कैसा जो अरेंजमेंट्स आपके लिए किए गए हैं, आप व्यापारी यहाँ पर आए तो ये ठीक अरेंजमेंट है? मुतमईन है आप सिक्योरिटी से लेके सारे इंतजाम? तामन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी तामन कर रही है, फौजी भाई इतने होंगे ने, पानी पुनी सारा देख जाने ने, बहुत ज़्यादा तामन कर रहे हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा सारे लोग आपके आके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे जो सब आके ताउन, पानी से लेके कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है? कोई ये सानू परेशानी नहीं किसी काम की है। अज सानू 12-13 दिन हो गए ना आए नू, बाकी ये हर साल ही आने, किसी साल भी ना परेशानी नहीं आने दी। अच्छा, किसी साल भी परेशानी नहीं हुई है। तो ये आप देख सकते हैं बच्चे ने अपने अगले साल दे, ये खीरे बच्चे ने सारे। अच्छा, हाँ जी, 1 साल के बच्चे? हाँ, ये 10 महीने दे, 11 महीने दे, अगले साल बाद पढ़ाई बस आते हैं। क्या आपने तैयार किए हैं यार? 10 महीने में क्या खिलाते हैं और आप भी क्या खाते हैं यार? खा रहे हैं अगे, देखो अगे वही खा रहे हैं। तो आप भी माशाल्लाह जो है वो जबरदस्त पहलवान है। पंजाबी जवान आ, कोई कराची वाले नहीं, पंजाबी। ये जरा देखें अदनान, जरा दिखाएं तो सही ना यार, ये जो काम हुआ हुआ है यहाँ पे। आप जानवर देख सकते हैं किस। आइए आइए जरा, तो इधर आ जाएं आप मेरे साथ, इधर आए ना, आपके साथ बात होगी। ये जरा, ये क्या प्रोडक्ट है आपकी? वैसे हम भी पहलवानी है। पहलवान है, बिल्कुल सही बात है। मंडी में घूमे ऐसा है बछड़ा कहीं? नहीं 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 नहीं, ये बछड़ा तो भाई कौन सी नस्ल, कौन सी है ये? साहिवाल क्रॉस है। साहिवाल क्रॉस? जी जी भाई, ये एक ही है मेरे ख्याल इस साइज की। हाँ, एक ही है। कुछ बछड़ा देखो, आपको पसंद लगा? अरे बहुत ही जबरदस्त किस्म का बछड़ा है भाई। बहुत ही जो है ना अपना मज़ा आया और हम लोगों को भी बता रहे हैं। पंजाब के शेर आपने देखे कि वाकई में शेर लेकर आए हुए हैं ये लोग ना। पंजाब के आप ही शेर ने। जरा देखें, जरा अंदाज अपना बताएं। आप ही शेर ने देखा? पंजाब के शेर, दोबारा बोलेंगे आप? पंजाब के शेर हैं, जानवर भी शेर हैं, हम भी शेर हैं। शेर आ चुके हैं जी मैदान में। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मंडी जो है वो मवेशी मंडी सज चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सारे के सारे जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कोई पूरे मुल्क से, यानी कि KPK से भी लोग आए हुए हैं और हर जगह से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। कैसा अरेंजमेंट्स वगैरह? खुश हैं, मुतमईन है, मज़ा आ रहा है? बेहतरीन माहौल है मंडी का माशाल्लाह, पहले से भी बेहतर है, बहुत ही बेहतर है। फ्लाइट भी VIP है, रास्ते भी खुले हैं, पानी का जो इंतज़ाम है वो भी बेहतरीन है। आप यानी कि बहुत मुतमईन है, बहुत खुश हैं? बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही। बिल्कुल, असल चीज़ है कि तमाम व्यापारी जो पूरे मुल्क से आते हैं, इनका मुतमईन होना, इनका खुश होना, और आपने जिसको सुना होगा वो तमाम के तमाम लोग ख़ासे मुतमईन दिखाई दिए हैं। वैसे मैं अगर थोड़ी सी आपको इस मंडी की डिटेल भी बता दूं तो उसके मुताबिक 2024 में 900 से 1000 एकड़ पर ये मंडी कायम हुई है। अगर आप देखें तो ये पूरा रकबा, पीछे भी अगर आप दिखाएंगे तो दूर दूर तक 1000 एकड़ पर कायम की गई है। छोटी जगह नहीं है ये। उसके साथ साथ इसमें मजमूई तौर पर 20 ब्लॉक्स बनाए गए हैं और उन ब्लॉक्स की मैं बात कर लेता हूं तो उसमें VVIP ब्लॉक भी है, VIP ब्लॉक भी है और नॉर्मल ब्लॉक भी है। तो तमाम के तमाम ब्लॉक आप लोगों के लिए, जितने भी मवेशी मंडी में जितने व्यापारी आ रहे हैं, सारे मुल्क से आ रहे हैं और आके अपना
कारोबार करने के लिए पहुँचे तो 3 डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, जिसमें वीवीआईपी भी है, वीआईपी भी है और एक नॉर्मल ब्लॉक भी, और इसके 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक नहीं है। व्यापारियों को पहले पाइए की बुनियाद पर यहाँ पर तमाम मुफ्त जगह दी जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन व्यापारियों को यहाँ पे फराम की गई है कि आएँ और आके आप बिज़नेस करें, और इसके साथ साथ हमारे शहर के लोगों को, यहाँ बसने वाले लोगों को सुन्नत इब्राहिमी बेहतर अंदाज से अदा करने का मौका मिले। उसके बाद अगर मैं आगे चलता हूँ तो कई और चीज़ें दिखाई देती हैं कि मंडी में दाखिला फ़ी गाय और फ़ी ऊँट 4,250 रुपये है, जबकि फ़ी बकरा और फ़ी बकरी की कीमत 2,000 रुपये रखी गई है। तो फिर एक मुनासिब कीमत रखी गई है मंडी में। जब आप अपने जानवर लेके आते हैं, आपने देखा होगा एक बड़ी तादाद में जानवर अब भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ नमाजियों के लिए ख़ास तौर पर मंडी में जगह जगह जो है वो मस्जिद की सहूलत फराम की गई है। इसके साथ साथ हर जगह पे जो लोग भी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आएंगे उनके लिए टॉयलेट्स रखे गए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने आपको दिखाया था कि होटल से लेके जूस के स्टॉल और दीगर स्टॉल्स ऑलरेडी यहाँ पर कायम हो गए। बहुत सारी सहूलतें यहाँ पर फराम की गई हैं, जिनमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें ख़वातीन के लिए भी अलहदा टॉयलेट्स हैं। मैं एक मरतबा फिर आपको बताऊँ कि बहुत सारी ख़वातीन आना चाहती हैं बकरा पीढ़ी, लेकिन वो नहीं आ पाती सहूलतों की वजह से। तो आपके लिए नमाज़ पढ़ने की सहूलत भी है ख़वातीन के लिए, एट द सेम टाइम आपके लिए टॉयलेट्स खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ मवेशी मंडी में किया गया है। इसके साथ साथ पक्के सीमेंट के ब्लॉक बनाए गए हैं बहुत सारे पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए। बहुत सारे इक़दामात यहाँ किए गए। मवेशी मंडी में बैंक की सहूलत भी मौजूद है, तो बैंक की सहूलत भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी 24 घंटे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं है मुंतज़मीन ने। जो मसाइल पहले रहे हैं उन मसाइल को दूर किया जाए, और इस दफ़ा इंशाल्लाह जो लोग भी मवेशी मंडी ख़रीदारी के लिए आएंगे उन्हें कोई मसला नहीं होगा। कुछ पुरानी वीडियोस वगैरह होती हैं, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल आप व्यापारियों से भी सुन चुकें, लोगों से भी सुन चुकें, तो तमाम के तमाम लोग मुतमईन हैं, सबको इत्मीनान है। और आप इत्मीनान से आएँ ताकि अपना जानवर यहाँ से ख़रीदें कुर्बानी के लिए और सुन्नत इब्राहिमी अदा करें। मजबूत आपसे यहाँ मुलाकात करता रहेगा, जल्द आपसे फिर मुलाकात हो रही है। मवेशी मंडी में तेज़ी के साथ जानवर आ रहे हैं, अभी तो वक्त खासा बाकी है, लेकिन पूरे मुल्क से जानवर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिनको जल्दी ख़रीदारी करनी होती है जानवरों की, वो इस वक्त आके बासानी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो जानवर के साथ मानूस होते हैं, उसको पालते हैं, 15-20 दिन रखते हैं, तो फिर यहाँ आ जाए, आपको हर चीज़ बेहतरीन अंदाज में, बेहतरीन रेट में मैसर होगी। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ मवेशी मंडी से इजाज़त चाहते हैं, और आएँ और आप आके ख़रीदारी करें। अल्लाह ने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तरफ से हमने स्टॉल लगाया है पराठों, और मार्केट रेट से हमारा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। 180 रुपये का है और यहाँ पे हम 105 रुपये का दे रहे हैं। एक पैकेट में 6 पराठे होते हैं और ये फ्रिज में ख़राब नहीं होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उनके साथ हमारा ना अल्हम्दुलिल्लाह आप अगर ट्राई करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा है। ये इस वक्त कराची में चल रहा है, जो कि लोग ज़्यादातर शहरी में इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जो ऑफिसेज वगैरह के जो लोग हैं, जो सुबह में उनको जल्दी होती है नाश्ते की, जो जाके लाइनों में नहीं खड़े होते होटलों में, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पराठा इस्तेमाल करते हैं और इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, पूरे कराची के अंदर ये बड़ी बड़ी चीज़ और मिले आप पर दस्तयाब है।
और बदर का हम बहुत शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने रमज़ान के महीने में ये इतना बड़ा जो ना स्टॉल लगवाया और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों के इधर कीमत भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है मार्केट से। और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है बदर एक्सपो इंशाल्लाह हर साल हर महीने इसी तरीके से बचत बाज़ार लगाते रहेंगे। Federal Minister for Defence Production, Federal and Provincial Ministers, Chief Minister Singh, Chairman, Joint Chiefs of Staff, Services Chiefs, Director General, Defence Export Promotion Organisation, Senior Civil and Military Delegates, Chairman and Chief Executive of the National and International Defence Organisations, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum and good morning. It is my pleasure to speak at the 11th edition of the International Defence Exhibition and Seminar, commonly known as IDEAS 2022. I am very pleased to see the presence of a large number of guests, including honourable delegates, exhibitors, and trade visitors who travelled from around the world to join us today. I welcome you all to the special edition of Innovation and Excellence. Indeed, your presence here today truly strengthens our resolve to foster and promote strategic relations with our partners and friends while encouraging technological growth and knowledge sharing. Distinguished guests, since our government formed, our unity government formed in April this year, coalition government has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default, and shukr alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. The most unfortunate aspect of this economic crisis was, in addition to the economic impacts of the COVID pandemic that affects each and every nation across the world and has caused economic difficulties for citizens everywhere. In addition to the economic impact of the conflict, the Russia-Ukraine conflict, the risk of economic default in Pakistan was not only exacerbated by these factors, but a direct result of conscious decision-making. This was effectively a collective shooting oneself in the foot. And it is something that we must all agree should never happen again. Of course, of our governments come and go, political parties change, but we should never compromise the fundamentals of our national economic policy. At this time, we've been focused on making service delivery efficient and people-centered, fixing Pakistan's energy woes, rebuilding Pakistan's foreign relations, and giving a sense of stability in our policy, if not political environment. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork and extensive positive engagement across the board,
Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, the rest of the world, culminating in our exit from the FATF grey list, the Financial Action Task Force, and on our way, hopefully, the restoration of our GSP Plus status. Just when this looming economic crisis was averted and things started to move in a positive direction, we experienced the worst ever climate catastrophe that Pakistan has ever seen. The monsoon on steroids, as Secretary General Antonio Guterres put it, resulted in 1/3 of the landmass of our country being underwater. 1 in 7 people affected, that's 33 million people of Pakistan, 16 million of which are children, 600,000 women waiting to give birth. The impacts of this on the backbone of our economy, the agricultural sector, have been devastating. The total loss and damage is estimated at more than $32 billion, which is 10% of Pakistan's GDP. This climate event will directly correlate with a significant portion of our population being thrust below the poverty line. Given the massive scale of destruction, we have been pushed back for decades, but in every crisis, there is an opportunity. And we can convert this crisis into an opportunity if Pakistan commits to not only investing in these less developed areas, in these rural areas that have been devastated by the flooding, but also as we look towards reconstruction and rehabilitation. We hope to do so in a climate resilient manner. We too share the aspiration to not only build back, but build back better. In our interactions with world leaders, including the recently concluded COP27, we have underlined the need for concentrated global action to climate change as a priority. As the chair of the G77 plus China, we have led the demands of the global South for climate finance and climate justice to enable developing countries to cope with climate adaptation and mitigation challenges. But in addition to that, we have, alhamdulillah, been successful, and this is a success not only of the developing world that has long held this demand, but of Pakistan and the people of Pakistan, that following the devastation from this climate catastrophe, in our capacity G77 chair, we have successfully negotiated to add on to the COP27 agenda, in addition to mitigation and adaptation, but the concept of loss and damage. Because it was only after we in Pakistan experienced the devastation of these floods that resulted in a 10% loss to our GDP, that it became evident to us that there was no international financing mechanism for devastation, for loss and damage of this scale. And it was after our own experience that we joined the many countries that have long been demanding that loss and damage be added to the COP and global agenda. And we hope it was too late for the people of Pakistan to benefit from the lack of such an institution, that the next country, the next developing country to be affected, will be able to benefit from an internationally agreed upon mechanism for financing loss and damage. There should be no doubt in anyone's mind about the potential of climate change to reverse all endeavors sustainable development goals. Climate change is one of the most national security threats that can ignite and deepen conflicts. And as we have witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated.
Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threats to national security and stability of countries. With rapid advancement of technologies and proliferation of related knowledge, we are experiencing a visible change in the established security paradigm. In today's globalized world, the national security has emerged as a dynamic concept that is as much economic, political, social, and institutional as it is military and strategic in nature. In an age of fake news and disinformation, the threats to national security have increased manifold. The specter of rising global food and energy prices is putting immense strain on national cohesion and unity, thus deepening internal fault lines. It is our considered opinion that the best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions, deliver the 21st century governance that is demanded and required, ensure rule of law, and put the people at the center of public policy. This requires a much needed reset in our thinking, as well as the way we conduct business of the state. Internal consultation can alone enable our nation to secure its core economic, foreign policy, and security interests. And in order to do so, each institution must function within not only their constitutional domain, but with a primary focus on their objective, on their national goal. For example, I am a politician, I am a parliamentarian, I represent my constituency in parliament. My job is to be answerable to parliament, to be present in parliament, and rather than lashing it out my political opponents on the streets or in the public arena, we have created this forum where all people of Pakistan can be represented, where our exchange of ideas, our debate should lead to the addressing of issues of national importance through consensus, so we can move beyond our existing state of flux and focus on the priorities of our nation. Distinguished audiences, the new technologies led by this revolution in the field of artificial intelligence are playing a vital role in confronting various security challenges. In my view, responsible use of technology advancements can make the world a better, safer place. Pakistan, being a responsible state, is also committed to play its role for international peace, stability, and order. Reciprocity, mutual interests, and international norms are the guiding principles that govern Pakistan's relations at bilateral and multilateral levels. In the regional context, the transformation of South Asian geostrategic environment further accentuated the importance of this region in world affairs. Resultantly, regional cooperation and active engagement with regional and global players is imperative, particularly to achieve regional peace, security, and socio-economic development. On the other hand, instability and turmoil that has beset our region for many decades also a firm and coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also to unlock the immense economic potential of our region. It is here that the peaceful resolution of the long-standing occupied Jammu and Kashmir issue is in light of the UN resolutions and aspirations of the Kashmiris is central to the establishment of sustainable peace in South Asia. Distinguished guests, it's heartening to note that Pakistan's defense industry has now achieved a good level of quality and reliability, wherein its products are comfortably competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, yet the volume of exports, in my opinion, is not commensurate to our actual and true potential. A crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector in defense production and export activities. And relatively less attention has been paid to academia industry interface and in the involvement of R&D organizations, which has curtailed the competitiveness of certain sectors of industry. In order to achieve this objective, I will stress upon the integration of public-private defense industry to achieve maximum results. New ideas and the entrepreneurial and management skills of the private sector need to be co-opted
with public sector defense industry. The potential of academia and R&D organizations needs to be incorporated with the defense industry for efficiency as well as volume to our defense production exports. Our government, ladies and gentlemen, will continue to promote a business-friendly environment for investments in human capital and professional development in the demand-driven industry. The Unity Government is also committed to deliver an industrial strategy that contributes to growth and employment and encourages small and medium enterprises to come forward and join hands for the development of our defense industry. In this regard, I look forward to the Ministry of Defense Production's formulation of a clear policy framework to integrate the whole potential of Pakistan's defense industry. Distinguished guests, when we talk about the defense industry, International Defense Exhibition and Seminar is an iconic platform for showcasing latest defense technologies and innovations. In fact, Ideas is a regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defense cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. On the other hand, the presence of a large number of exhibitors and delegates reflects Pakistan's deeply embedded and mutually beneficial relations with the international fraternity. I would say that Ideas is a shared vision for global peace, stability, and harmony amongst the community of nations. And the Ideas slogan, Arms for Peace, truly reflects Pakistan's principal stance in this regard. Ladies and gentlemen, before I wind up, allow me to appreciate the efforts of the Ministry of Defense Production, Defense Export Promotion Organization, for successfully holding a series of ideas to get the best of Pakistan's defense sector and promoting international cooperation in the field of defense production. I applaud the continuous support of the federal and provincial ministers, the Pakistan Armed Forces, enforcement agencies, and the government for the successful conduct of this mega event. I am also very pleased to know that the Pakistan Postal Service has issued a commemorative postage stamp to complement the holding of this very special edition of Ideas 2022 in the 75th year of the independence of Pakistan, and I am positive that this landmark event will achieve more progress in the years to come. I thank you all. Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। अभी तक तो बचत बाज़ार अच्छा जा रहा है, बदर एक्सपो की तरफ से जो लगा है। लास्ट ईयर भी हम लोग आए थे तो यहाँ काफ़ी अच्छा था और इस साल भी काफ़ी अच्छा है। रिस्पांस पब्लिक का फुटफॉल थोड़ा सा मेरे ख्याल से और होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग इधर काम करने के लिए बैठे हुए हैं और बचत बाज़ार जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, तो बचत के अंदर लोगों को अच्छी खासी हम लोग बचत दे रहे हैं। जैसे ये आलू है, तो बाहर के अंदर आलू 3 किलो का आलू का बैग आपको अगर 3 किलो आप लेते हैं तो आपको बाहर से मिलता है 220 रुपये तक का ऑन एवरेज प्राइस अप्रॉक्सीमेटली। हम लोग आप दे रहे हैं 150 रुपये का 3 kg।
जैसे ये प्याज आ गई, अब ये प्याज है, ये प्याज अच्छी प्याज है, सबसे बेस्ट क्वालिटी की एक्सपोर्ट की प्याज है, सेम एज आलू। तो प्याज आपको हम लोग दे रहे हैं 500 रुपये की यहाँ पे 3 kg, और बाहर आपको भी रेट पता है और मुझे भी रेट पता है कि 600 से कम रुपए के अंदर आपको 3 kg प्याज नहीं मिलनी। सेम एज अगर हम टमाटर देख लें तो टमाटर के अंदर हमारे पास काफ़ी अच्छा टमाटर पड़ा हुआ है, और अगर आप टमाटर का देख सकें तो टमाटर सारा बड़ा टमाटर है और सारा लाल और अच्छा टमाटर है। यही हम लोग 60 रुपीज़ के पर kg हिसाब से हम लोग दे रहे हैं, और बाहर आपको 70 रुपीज़ का बाहर टमाटर पड़ रहा है। तो इससे ज़्यादा तो बचत, ईद से पहले ईद आ चुकी है, तो आई बी मैं बहुत खुश हूँगा कि आप लोग आएँ और इस चीज़ को अवेल करें। बाकी थैंक यू सो मच बदर एक्सपो, एंड थैंक यू सो मच बचत बाजार, एंड थैंक यू सो मच कराची। मेरा नाम मोहम्मद दानिश है और मैं बेरिया फाउंडेशन पाकिस्तान नेवी से मेरा ताल्लुक़ है। हमने एग्जीबिशन में जो है अपना स्टॉल ये लगाया है अवेयरनेस के लिए, मेडिसन की अवेयरनेस के लिए, कि जो हम आवाम को अवेयरनेस दें कि जो कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो है जालियत व्याध लोग बनाते हैं, तो भी दें कि आप लोग मेडिसन, मल्टी-नेशनल मेडिसन को देखें। और जो एक्सपो है ये आवाम के लिए बड़ा अवेयरनेस रखता है, और इसे है कि आवाम को जो है आवाम को अपनी हेल्थ में जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बदर एक्सपो इन्होंने बड़ा अच्छा एक इकदाम उठाया है लोगों के लिए, आवाम के लिए, और यहाँ की जो सर्विसेज है बहुत अच्छे हैं। और फाउंडेशन का यही है कि हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी आम है मेडिसन डिस्काउंट पर भी मिले, और जो मेडिसन है वो जाली ना हो, और मेडिसन ओवरऑल जो है कंपनीज़ की हो। Merhabalar, Ergin Akyüz, Trabzon Silah Sanayi Dış Ticaret Müdürü olarak görev yapıyorum. Firmamız 1993 yılında Trabzon'da kuruldu. Entegre tam kapasite üretim tesisi. Yarı otomatik tabanca üretim yapıyoruz. Markamız Zigana. Firmamızda yarı otomatik silahlar Zig 14, 1911, TX polimer silahımız mevcut. Bunun yanında kendi üretimimiz ve kendi dizaynımız olan Zigana serisi, Zigana Sport, FK modellerimiz de mevcut.
आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक बाइनियल इवेंट है, हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से अब 2020 में हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके, तो ये अब 4 साल के बाद हो रहा है। तो उसकी वजह से अब इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है और हम इंशाल्लाह पूरी तरह इसके लिए तैयार हैं और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट कराया गया था उससे मज़ीद बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशंस की कमीशंस आ चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया के तमाम बड़े आज़मों से हमारे पास यूनिटीज़ आ रहे हैं और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जिबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस है वो ये है कि सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है उसको भी लूप में लेके आएँ और उनको भी एक आउटलेट मिलता ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको टेस्ट कर सके। इस पर भी इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्कों से आने वाली कंपनीज हैं, OEMs हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनका तो अपने बिजनेस को आगे और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं एट टाइम्स उनकी भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ। तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी अच्छा साइन है। जिस लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल जैसा कि मैंने बताया आ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में इसका इनेकाद दिया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज एक जो यहाँ पर आएंगे वो लेके जाएंगे। उनको पता चले पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सकता है और तमाम तर जो अल्लाह का बहकर है कि अब हमारे साथ वो सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं जो हुआ करते थे और इस तरह की चीज़ होगी। और आजकल फ्लड बाकी जो हालात हैं उसके बाद इस तरह की इवेंट कंडक्ट होना ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह से फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम मुनक्किद करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा। सेगमेंट 1 टियर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले ही उसका इनेकाद किया जाएगा और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकेंड टियर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा दैट विल बी सेकेंड डे ऑफ आइडिया, उसके अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो आके अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा 2 दिन हमने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को इनवाइट किया हुआ, तो सुनेंगे और डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन है कराची एक्सपो सेंटर उसके बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटडोर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स के हैं सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट कर से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। सिंध गवर्नमेंट बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्न हमेशा मिलती रही है, पास्ट में भी मिली है और इस दफ़ा भी आपने देखा कि हमारी जो 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी हेल्ड एट CM हाउस, काफ़ी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने उसको शेयर किया और पर तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड्स मौजूद, उनको जिस तरीके से CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली उनका बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ दिया तो चीज़ें बहुत हमारे लिए आसान हुई। इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। समझून है मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। समझून है मुझसे तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं खुद भी तो हूं इकबाल अपने नुक्ता चीनों में। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल।
पर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। और मजहब से है, मजहब जो नहीं तो तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिले अंजुम भी नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। Puts together stickers across diverse fences. The exhibition is a platform for G2G, B2G, and BTV joint ventures and investment center. Also, discussions on challenges within the defense of ideas will be held from 19 to November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good evening to all of us. So today I would like to deliver presentations about the life network aware, its component and challenge. Next slide, please. I divide this topic into 4 subtopics. The first one is that I will give very brief introduction about GNAPs, the PI, the use cases, standardization roadmap, and so on. And then from topic 2 until 4, they are about the memory. How are the 5G enablers that can be necessary? How 5G can be very beneficial, can be used for the future battlefields, and last but not least, maybe, so what are some technical challenges in there that we need to consider? Okay, next slide. So I will start with this triangle, which is very famous in explaining about 5G. If I only have one slide, you can see here that in 5G, basically, there are 3 very big use cases. The first one is called the massive broadband, which means that the speed is much faster than the existing one, the existing 4G or even the 3G and so on. And then the next one, the bottom left, no, previous slide, please. Okay. The bottom left is about the massive machine type communications. So this is about so many devices are connecting to the network. For instance, in this kind of venue or in the stadium and so on, even if there are cellular signals, in most of the cases we cannot connect to the network. It is because number of connectivity are limited. So in the 5G, this kind of problems is solved. So one big use case in the 5G will be massive machine type communications, which is later on be used very much for the IoT, Internet of Things, and so on. And then the third use case is about critical machine type communications. This is about the very low latency, even less than 1 millisecond latency. So using these 3 generic subcases or big use cases, then there are many possibilities, like using 5G for sensor network, using 5G for industry 4.0, using 5G for streaming, using 5G for autonomous driving or semi-autonomous driving, so on and so on. Next slide, please. So if we want to see a little bit detail, then the upper left or upper right picture showing how we can compare the 5G with the 4G. So 5G is much better in all the aspects. And then we can see also in there several KPIs of the 5G, but I think it's difficult for you to read. But here I just want to show you that with all these KPIs, all this performance, we have very big possibilities to use it in very various type of use cases.
for smart cities, for mobile broadband, for the automated controls, real-time telematics, and so on and so on and so on. And of course, 5G is connected to the AI and also the edge computing. Next slide, please. And in this slide, you can see that the standardizations of 5G is now still ongoing. We call it the release stages. Release 14, release 15, release 16, release 17, and so on. 2022, so the release 17 is over there, which means that the full set of 5G will be available in the market already. And some countries have launched the 5G. I think Pakistan is not there, but some countries like Korea, Japan, US, Germany, Saudi, and many countries have launched the 5G, so they can use all the capabilities. Next slide, please. And then, if we relate this to this event, actually, even though 5G is originally developed for civilian applications, recently there are many studies saying that 5G can be used in defense. This is from Light Market Research saying that global 5G in defense market is expected to reach $70,000 million US. This is quite significant number. Next slide, please. Next. So, how 5G can be used for the defense? There are several. I don't know if you can read the slides because the fonts is quite small. But actually, there are some enablers in the 5G that is very significant for the military. The first one is the NFV, Network Function Virtualizations, in which most of the network functions will be virtualized. And then also SDN, software-defined network will be defined in software, not hardware. And also network slicing, which is the sub-parameters, can be very easily changed and done for different types of use case. And then orchestrations, end-to-end orchestrations. This one is using AI. And then cloud native, mobile computing, and of course, millimeter wave. Next slide. With all those key enablers, we can see that there are many research about using 5G for the military. This is just a few examples, like the one done by LMT and then Pineapple and so on and so on. Next. Okay. So this slide explaining in brief about how this 5G can be used for military applications. The first and the foremost is that it can be used for the military decision making because of the quality of connectivity, the very low latency, and so on and so on. Several studies investigating about how 5G can be used for military decision making, and then also for smart warehousing, and then for distributed command and control in the battlefield. Some studies are investigating about the use of the 5G for NTN, non-terrestrial network. Also for tactical communication, tactical that in the battlefields using millimeter wave, so that we can use very high frequency, high directivity, and very low latencies. Also the proximity service, PROSI, 5G for the RVR, augmented reality, and the virtual reality, also the mixed reality, and also for the geointelligence. These are some pictures, some pictures that is showing that how this 5G can be used and has very big potential for the military applications. Next. However, we can see that still there are some challenges in the 5G. The first one, click please, next, is related to the KPI challenges. Not all KPIs are there, but it is in the process. Next. The next one is about architecture. 5G is much more efficient than other 4G than 3G, of course. Okay. But if you can see here that the contribution of 5-layer algorithms is about 5 times. Contributions of spectrum is about 20 times. The biggest contributions comes from smaller cells. It is 1,600. So all these components, if it is there, then
It is very good. In fact, not all of them there. Next. And then the next one is the most important, I think the most important part here is that challenge of softwareizations. Okay, in the legacy network, in the 4G, software and hardware is interlocked with each other. Most of them are not open. And then in 5G, there is so-called decoupling between software and hardware, so that we can develop the software and virtualize the hardware and so on and so on. And then post 5G, after beyond 5G, it is not just decoupling, but also orchestrated using the AI. So this is the most important technical revolutions in the 5G. Next. Next one is about the bandwidth and delay. I think we can skip one, and then next one. Next. The next one is about the use of the IPv6. One. So, as we can see that one of the things that have big impacts on the security in the 5G is softwareizations. Softwareizations mean that NFV, SDN, it's cloud computing, and so on. All of them are softwareizations, and it has very big impact for the security aspects. Next. 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 Okay. If we compare this 5G to 4G, then 5G is much better in terms of security, much more secure. The problem is that because 5G is more software, meaning that the security problem difference. So we need different approach of assessing the security of mobile cellular communications, like Lars said just now. Maybe we need to use the cybersecurity approach. That's what makes the 5G more challenging. It is much more secure than 4G because of this variety of uses, meaning that it also increases the surface of for attacks. That's why this is very big concern to use this 5G for military. Next slide, please. And of course, the security standard itself still ongoing. Now, next. The problem is this one. Even if the standard is there, okay, the standard is what we call it, the innermost rectangular. Okay. After that, there are some security issues which is depend on the vendor development process, and then another security issues that are related to the deployment process, and then another security issues that are related to the operation process. That's why there are so many forums that are discussing about how we need to deal with this security issues in the 5G. 5G has very big potential to be used for the military, but there are so many challenges, technical challenges, software challenges, and the most important thing is that security challenges. So we need to do very important and serious research if you want to use this 5G for the military. Next. That will be the last slide for my presentation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. बहुत ही बड़ा इवेंट के जिसमें
अगर हम इंटरनेशनल डेलीगेट्स की बात कर लें, इंटरनेशनल ममालिक की पार्टिसिपेशन की बात कर लें, तो शायद पाकिस्तान का कोई दूसरा इवेंट जो है वो इसको मैच भी नहीं कर पाता। ये हमारा ट्राई सर्विसेज इवेंट है जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स मिलकर अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं और वहीं पर ही सारी दुनिया के लोग आके अपनी प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं। और कई सारे ऐसे जॉइंट वेंचर माजी में हो चुके हैं और इस दफ़ा भी इसके इम्कान बहुत दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की तमाम बड़ी कंपनीज़ वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल कंपनीज़ की बहुत बड़ी तादाद यहाँ अपना स्टॉल कायम कर चुकी है। आइडियाज़ 2022 जहाँ आर्म फॉर पीस जो उनका स्लोगन दिखाई देता है, जहाँ प्लेन की बात हो रही है, वही एक ख़ास टॉपिक इस आइडियाज़ 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। इस सिलसिले में एक प्रॉपर सेमिनार का इनेकाद भी किया गया और ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल को इससे आगाही दी गई। आज अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं तो सारी दुनिया में ये ख़ास सब्जेक्ट दिखाई देता है और सारी दुनिया इस पर एक ख़ास फोकस करती हुई दिखाई देती है। मेरे साथ तीन हमारे मुल्क की बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत गुफ्तगू के लिए मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस वक्त ये किन किन चीज़ों में हमारे लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है। इंतहाई आम शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, क्लाउड एंड मेटावर्स आर्किटेक्ट, CEO पैरा क्लाउड और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं ज़ियाउल्लाह खान साहब। थैंक यू वेरी मच ज़िया साहब, बहुत बहुत थैंक यू। उनके साथ MNP के बिजनेस हेड है मूलर एंड फिप्स के और इसके साथ साथ आप ज़बरदस्त किस्म की इस मामले में भी बड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुजम्मिल अतर साहब। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल साहब। जबकि उस साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ, अहम जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं, आइडियाज़ के साथ भी जुड़े हैं और जहाँ मुल्क में कोई मुश्किल आती है वहाँ पर ईसा लैब बहुत आगे दिखाई देती है। CEO ईसा लैब फरहान ईसा साहब। थैंक यू वेरी मच फरहान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान भाई ज़रा शुरू करते हैं ज़ियाउल्लाह खान से। ज़िया साहब, सबसे पहले तो आम लोगों को, मुझे भी नहीं पता तो मैं आप लोगों बात कर रहा हूँ, हम कुल आम लोग यहाँ बैठे, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, नॉर्मली जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं ना, जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि उसमें इंटेलिजेंस है, मगर वो भी नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि उसको भाई आपकी एज अगर 60 से ऊपर है तो प्लीज़ आइडेंटिफाई करें इनको ब्लड नाम से। अच्छा, इंटेलिजेंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम जो आपकी एज पूछ के जवाब देता है। मगर इसके बरखिलाफ तो ये नॉर्मल अभी जो अपनी ज़िंदगी में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नहीं होते। अगर आप जो आम आदमी इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल करने लगा है, आप फेसबुक पे अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं, वो आइडेंटिफाई करता है कि तस्वीर में कौन लोग खड़े हुए हैं आपके दोस्तों में और उनको ऑटोमेटिकली टैग करता है। अच्छा, अब ये सिम प्रोग्राम नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम है जो तस्वीर को देख के आइडेंटिफाई कर लेता है कि ज़िया है। तो इस काम के लिए आपको नए किस्म के प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। तो जो पुराने किस्म के प्रोग्राम है जो मोस्ट ऑफ द हम कर रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं होती, और जो नए किस्म के प्रोग्राम इन एक्सटेंसिवली इस वक्त इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। नए प्रोग्राम क्या है तो अच्छा, वो मिसाल के तौर पे वो टेक्नोलॉजी के मैं नहीं जाना चाहती हूँ कि काम वाली प्रोग्राम है, मगर आप ये देखिए इस तरह आप कि मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना पहले तो ये होता था कि, और अभी यही होता है, क्या करते हैं कि उसको ना ट्रेन करते हैं। ट्रेन से मतलब हम क्या करते हैं, उसको ना जैसे मेरी 10 तस्वीरें दिखाएंगे उसको। अच्छा, हम जिंदगी में मुझे कैसे, मुझे 2-4 दफा होगा तो पहचानेंगे। अच्छा, कंप्यूटर भी अब इस तरह करने लगा है कि आप खुद नहीं लिखनी पड़ती, आपने उसको कहा ये तस्वीर है, ये तस्वीर है। अच्छा, 2 दफा किया ना तो वो ऐसे प्रोग्राम है जो उससे मतलब निकाल लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर आधा कोई नई तस्वीर दिखाए तो वो मुझे जान लेंगे कि ये भी ज़िया है। तो इस काम के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त जो टेक्नोलॉजी यहाँ चाहिए आपको करना पड़ता है। अगर आप ट्रेनिंग करेंगे, यानी डेटा चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो जुड़ी हुई है साइंस, डेटा साइंस, तो आपको जैसे हमारे पास इस लैब्स के वो थे में अभी क्या होता था, ब्लड आया, ब्लड पिन में वो देखता है डॉक्टर, आइंदा को अभी बुरा इनके पास भी हो तस्वीर से डायग्नोज, उसको सारी तस्वीरें दिखाते हैं, मगर ट्रेन करना पड़ेगा, चाहिए होगा तस्वीरें दिखा के कि ये कैंसर है। फिर जब वो नया कैंसर देखेगा तो फौरन पहचान जाए कि ये कैंसर है। तो पहले इंसान कर दे, आप मशीन कर सकते। मैं ना चाहूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तरीके से आप यूज करते हैं आम जी के अंदर, क्योंकि एक आइडिया इसको ज़्यादा और बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि अगर बात करता हूँ ज़ोरा साहब वो ज़बरदस्त किस्म के एक्सपर्ट, इन IT सर थ्रू इस इंटेलिजेंस को किस तरीके से सामने लाया जा सकता है। मैं अपनी शुरू करने से पहले ज़िया साहब के साथ बैठे, ये इनके बैठना ही मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात।
जो तारुफ आपको बहुत मुख्तसर था है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग के अंदर ये के साथ मेरा बैठना है कि सूरज के सामने रख दें तो मैं तो के सामने ज़ाहिर है छोटा नौरात कर सकता हूँ। एक्सपर्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर इलानी वेलफेयर का जो इनिशिएटिव है पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत बादार के अंदर आईटी एक्सपर्ट्स बनाने का, उसके अंदर बड़ा हम ये प्रेसिडेंशियल लेवल के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अलवी साहब के साथ कर रहे हैं इस वक्त। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारी, एक दो बहुत बड़े के दरमियान में ने मुझे बिठा दिया है, तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमने शुरू किया है, जिस पर इन्होंने इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा काम कर रही है, टाइप है। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इन दो चीज़ों के अंदर जिया से बताया, शुरू में जो मामूली चीज़ थी वो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं, और उसके बाद जो आप इसके अंदर आगे बढ़ते चले आते हैं। जैसे एक आज की तारीख में जो गूगल असिस्टेंट, अगर आप बात करें एप्पल की, तो वो AI के तो सी को इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरीके से जो स्मार्टफोन उसके अंदर उसके साथ अलग इस्तेमाल होती है एंड्रॉइड अंदर। तो ये डिफरेंट टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेफिनेटली सबसे ज़्यादा जो पावरफुल समझाती है, अगर गलत नहीं हो तो उसके अंदर सिरी को समझा जाता है। गूगल बेस को बहरहाल ज़्यादा फोकस हासिल के बाद सिरी, उसके बाद फिर जो है अलेक्सा को। के अंदर जो बड़ी चीज़ है वो ये कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कहाँ पहुँच चुकी है। आपका फ़ोन आपसे ज़्यादा जानता है। मैं चंद एक मिसालें बड़ी दिलचस्प आपके साथ रखूँगा। आप दिन में कितनी दफ़ा कौन सी जगहों के ऊपर विजिट हैं, इसका डेटा आपके फ़ोन के महफूज हो रहा है, आपके कोऑर्डिनेट्स के साथ, के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ महफूज हो रहा है। उस जगह की फिर निशानी, चूंकि उसके पास पैसी जगह प्रोग्राम में सेव हुई है, तो वो निशान करता है कि आया ये जगह आप कम की जगह है। वो जब टाइमिंग देखता है, आप 10 बजे 9 बजे दाखिल होते हैं और वहाँ आप 6-7 बजे निकलते हैं, तो डिटेक्ट कर लेता है कि ये इसकी वर्क प्लेस है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने फोन के अंदर जो रोजाना जाने वाले हैं, जब वो गूगल से जाएंगे तो आप वर्क प्लेस आ रही होगी, आप भी ऐड नहीं किया उस प्लेस को। इसी तरह रात का टाइम ज्यादातर आप घर पे गुजरते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि जो ज्यादातर लोग के वो शाम के बाद के सुबह तक का वक्त घर पर गुजारते हैं, इस वजह से वो उनकी होम की कैटेगरी दर नजर आ रहा होता है। अच्छा, इसी तरह से चूंकि सैटरडे संडे एक दिन डेफिनेटली आप घर से, तो वो आपके इसी तरीके से आप अगर एक खास टाइम के अंदर घर से निकलते हैं और एक जगह जाते हैं, उसको डिटेक्ट करता है कि मस्जिद जा रहा है, तो आपके बारे ये निशानदेही होता है कि आप मस्जिद जाने वाले हैं और दिन में कितनी दफा, यानी आप 5 वक्त नमाजी हैं, 2 वक्त, 1 वक्त है, जुम्मे के जुम्मे पढ़ते हैं आप, ये आ रहा है। अच्छा, बाद आप जिन लोगों से मुलाकातें करते हैं, आप से जो स्कॉलर है, इस्लामिक स्कॉलर, आप उससे मुलाकात हैं, आप हफ्ते में 1 मिलते हैं, 2 दफ़ा मिलते हैं, महीने में 2 दफ़ा जाते हैं, उससे आपकी शख्सियत के बारे में गेज होते हैं कि आप एक खिलाड़ी मिलने के लिए जाते हैं रेगुलर बुनियादों के ऊपर, आप इस्लामिक स्कॉलर मिलने के लिए जाते हैं, आप डॉक्टर के पास मिलने के लिए जाते हैं, डॉक्टर फिर वो किस फील्ड का डॉक्टर है, बिकॉज वो सारा डेटा उस डॉक्टर का भी बैक एंड के ऊपर या सेफ है, तो वो उसको लिंकेजेस क्रिएट करता है। आज की तारीख अंदर अगर आप इंटर्नशिप्स में, तो उनको इस बात की जरूरत है कि आपकी फेसबुक या गूगल की आईडी पास मिल जाए, उसके बाद वो आपके बारे में मुकम्मल मालूमात से ज़्यादा बेहतर उनके पास आ जाते हैं और उसकी बुनियाद पर वो फैसला करते हैं आइदर आपको वीज़ा देना चाहिए या आपको वीज़ा देना चाहिए, आकई उनके मुल्क की ज़रूरत है या आपके के लिए नुकसानदेह आ सकते हैं। तो ये मैं आपको इसकी बहुत ही मामूली मिसाल दे, जिस तरह फरमा रहे थे कि वो जो तस्वीर है, उस तस्वीर को देख के आप एक चीज़ बात ये, अगर आपके बचपन की तस्वीर, तो उन तस्वीरों की बुनियाद के ऊपर वो साल ब साल हर साल की तस्वीरों को उन चीज़ों के साथ आप दिखा सकता है और आपको कोई और प्रोग्राम रीड करने की जरूरत नहीं है। गूगल ऑलरेडी एक काम बैक एंड आपके कहे बगैर रहा होता है, तो आपकी तस्वीर की डिटेक्शन चेंजेस के 1 साल के बाद आपका अगर एक बच्चा है जिसका नाम है राफिया है या राबिया है, तो उसको डिटेक्ट करता है बचपन में इसकी ये था, उसके बाद साल ये हो गया, साल के बाद ये हो गया, 15 साल बाद इस कंडीशन के अंदर है, तो वो पूरी तस्वीरों की ट्रेस वो आपके सामने रख दे। मेरी बात लंबी हो गई, लेकिन बताना ये चाह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त आपकी जिंदगी के किस लेवल तक शामिल हो गई। बिल्कुल सही बात है फरहान, क्योंकि प्रॉब्लम टेस्ट करने के लिए आना पड़ता है। इस तरीके से अभी हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आपके शोबे में भी बड़ी कीमत साबित हो सकती है डाटा वगैरह हवाले से, या अगर कौन से टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, किस सीजन में हो रहे हैं, तो ये तो इंटेलिजेंस आपके लिए भी बड़ी कारगर हो सकती है। बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने यूज शुरू कर दी है, ख़ासतौर पर रेडियोलॉजी के अंदर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन हैं, उनकी हारों जिस तरह से
ने कहा कि वो उनकी इमेजेस और उनके रिजल्ट वो फीड हो गए और कंटिन्यूसली डाटा उनके खाया जा रहा है। और अब जो है वो बल्कि हमने एक स्टडी की जिसके अंदर तकरीबन हमारे 45,000 इमेजेस थे और जब हमने देखा तो 5,000 इमेजेस फीड कर बाद में पता ये चला कि इस इमेज के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चीज़ें पकड़ ली थी और ह्यूमन रेडियोलॉजिस्ट ने मिस कर दी थी। अच्छा, दूसरा ये हुआ है कि कोविड में डॉक्टर नहीं थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो ये हमने स्क्रीनिंग के तौर पे करना शुरू किया था कि जो नॉर्मल रेडियोलॉजी की चीज़ें हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, वो स्क्रीन हो जाएं और एबनॉर्मल वाली जो है वो रेडियोलॉजिस्ट के पास आए। इसी तरह से टेस्ट होते हैं, जैसे ख़ास तौर पे डेंगू आ रहा है और साथ दूसरे टेस्ट भी हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन है, लिवर के हैं, तो इनका डाटा भी काइल के रिजल्ट निकल के आते हैं। इस दफ़ा जो डेंगू आया हमने अनाउंस किया कि वो वैसे ना ब्लीडिंग हो जाएगी और दूसरे मसाइल हो डेंगू में, लेकिन इस दफ़ा लिवर फेलियर के साइन सिम्टम्स आए। तो हम लोगों ने ईसा लैब ने ये शुरू कर दिया है। फिर हम लोग ना बायो सेफ्टी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। कोविड ने जब आया था उसकी एपिडेमियोलॉजिकल के जैसे डेंगू जब इंडियन बॉर्डर्स पे आया था तो हमने सर्विलेंस कर रहे होते हैं और हम कहा था ये कराची पाकिस्तान आ जाएगा जो आ। फिर चिकनगुनिया बीमारी बॉर्डरिंग टाउन्स पे आई, हमने पहले से बताया था कि उसका बच्चा भी यही है और यहाँ तक पहुँच गई है, ये आ जाएगी। और उसके बाद एनसीओसी के साथ मिलके भी के साथ मिलके काम किया और उसके आई थिंक मैं बहुत मुबारकबाद भी दूंगा इसे इदारे को, एनसीओसी जो बना जनरल हमूद को चेयर करते और जनरल हुमायूं साहब कोर कराची थे, इन दोनों कॉम्बिनेशन से हुआ और आज वो आइडिया भी बानी है एक तरह से जो हो रहा है। जनरल हुमायूं का एक और चीज़ भी कि जनरल हुमायूं साहब ने जो सबसे बड़ा किया कि उन्होंने इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट को जो पहला, जहाँ पे हम आज बैठे हुए हैं यहाँ पे पहला तो पाकिस्तान का कोविड सेंटर जो स्टैब्लिश हुआ वो जनरल हुमायूं की वजह से हुआ जी। और जी अभी है वो, और मैंने भी उनको मुबारकबाद दी। और इधर का जो एक्सपो सेंटर स्टैब्लिश हुआ उसके दो बड़े पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट दुनिया को नजर आए और पूरे पाकिस्तान को आए। पहले तो यहाँ पे एक ऐसा मॉडल बना जो यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स थे उनकी प्रोटेक्शन बारे में काम हुआ। आपको बताऊं ये वो रिकॉर्ड है, जनरल हुमायूं थे, जीओसी जनरल अकील थे और ब्रिगेडियर शहजाद होते थे 25 मैक के उस ज़माने, इनकी और फिर बाद में जनरल नदीम अंजुम भी थे। उसमें हुआ ये कि एक डॉक्टर, एक नर्स, एक पैरामेडिकल स्टाफ, एक सफाई का जो रेड जोन यहाँ पे पेशेंट से मैं जो यहाँ पे हमारी ईसा लैब फ्री सर्विसेज दी पहले दिन से आखिरी दिन तक, एक शख्स को भी इधर जो कर रहा था एक को कोविड नहीं हुआ और इससे पूरी दुनिया हिल गई जिसमें सारे मैकेनिज्म्स इस्तेमाल हुए। सेकंड चीज़ है डेथ रेट, यहाँ पे बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग ऑफ द डिजीज ऐसी हुई कि यहाँ पे डेथ रेट ना होने के बाद जबकि डेवलप कंट्रीज के अंदर मरीज तो मरे ही मरे, खासतौर पे इंडिया के अंदर पैथेटिक उनकी कंट्रोल्स थे, जीरो, और उनको तो पाकिस्तान से हेल्प लेनी चाहिए थी और उन्होंने। और सेकंड चीज़ ये हुई कि जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको भी नहीं हुआ। तो पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस हैं और ये जो आइडियाज़ हैं और आज हम भी यहाँ पे मौजूद हैं कि जो सिविलियंस और बिजनेस कम्युनिटी, आर्म्स फॉर पीस और सब जो मिल के काम कर रहे हैं, आई थिंक कि ये इंडेवर्स जो हैं जो कोविड में नज़र आए और रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान ने, थ्रेट हार्डली हो सकी। आई थिंक ये हर जगह पे होगी और पाकिस्तान जिस तरह से भी प्रोग्रेस कर रहा है और जहाँ हमारे आर्मी चीज़ें गाइड कर रहे हैं, आई थिंक वी आर वंडर्स। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरह से पहले दिन सेमिनार में डाला, आपको बताऊं हम नॉट ओनली मेडिकल कम्युनिटी जो बायो सेफ्टी, बायो सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, ज़रूरत है, ये नेसेसिटी है, एक रियलिटी है और इसमें जो ये इसके ऊपर और भी ज़्यादा काम होना चाहिए। इसकी हाईलाइट आइडियाज़ किया, आई थिंक इसने एक तहलका मचा दिया। मुबारकबाद हो ऑर्गेनाइजर्स को। आ गया इंटेलिजेंस को समझ में आ गया कि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वाले सेक्टर में। हम दिफाई नूम में बैठे हुए, हमारा सेक्टर है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे डिफेंस सेक्टर में कितनी करामत है? असल में हमें ये देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से हम कोई 10 साल दूर हैं। आप इमेजिन वो दुनिया जहाँ पे मुल्क को अपनी फौज नहीं पड़े, रोबोट्स उतार दें। अब ये करें मुल्क अगर ये कर पाए कि एक भी उनकी उल्टी हो और सब रोबोट्स हो तो ये दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। और वो इस मैदान में नहीं, उस पर सोच लें कि वो थान गोश्त पोस्ट का जैसा इंसान होगा और दूसरी तरफ रोबोट होगा तो कौन? रोबोट ने जीता और उसको अच्छा फर्ज का नहीं जीता वो, तो कोई नया बना के फिर देंगे। जान नहीं जा रही, किसी की जान नहीं जा रही। मैं इररिप्लेसेबल हूँ, इंसान तो इररिप्लेसेबल है, मगर वो मशीनें तो कम से कम अगर मिलती भी हो गई। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि यहाँ आने से पहले, आज की आपसे मीटिंग पहले मैं जरा से पढ़ के भी आया। देखें, ट्रांसपोर्टेशन लेके मिलिट्री, जिसमें अब वो ये कह रहे हैं कि सामान, आपको पता है लॉजिस्टिक सबसे मसला होता है वॉर में। मेरे वालिद साहब भी फौज में, जिसको चलती है तो साथ पूरी हजारों ट्रेनें होती हैं, हजारों ट्रक होते हैं उसका सामान मूव करने के लिए। अब जब ऑटोमेटेड गाड़ियां आ रही हैं तो अगर आपका 1 लाख आदमी डिप्लॉयड है तो 10 लाख आदमी सपोर्ट करने के लिए होता है। मगर अब क्या होगा कि ये जो पहले स्टेज में ये वाले जो काम है
वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता ही है। सैन फ्रांसिस्को की सड़क पे और डेल की सड़कों पे ऑटोमेटेड गाड़ियां घूम रही हैं जिनमें कोई ड्राइवर नहीं। तो मन करें कि जो सारा ये लॉजिस्टिक्स है का सबसे पहले ट्रांसफर होगा वो होगा ट्रेनिंग। अब ये जो मेटा का कॉन्सेप्ट आया है, ये रियलिटी का और ऑगमेंटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट आया है, ये थ्रू ट्रेनिंग आपको एक्चुअल चीज नहीं, पायलट को एक्चुअल जहाज में होने की जरूरत नहीं है, वर्चुअल रियलिटी में ट्रेनिंग दी जा सकती है और इस सिपाही की भी दी जा सकती है। अच्छा देखिए, मेटावर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट आजकल पॉप किया है हमारे फेसबुक ने, और उन्होंने अपना नाम भी मेटा चेंज कर लिया है। मेटावर्स में ये हम क्या करते हैं कि देखिए अभी आप फेसबुक देख रहे हैं ना, आपकी इस पे फेसबुक है, तो आप सबसे बाहर हैं, आप बाहर से देख रहे हैं फेसबुक को। आप जैसे अभी कोई 15 दिन पहले मेटा क्वेस्ट प्रो में VR ग्लास है और उसमें थोड़ा एयर का कॉन्सेप्ट भी है। VR क्या वर्चुअल रियलिटी है, नहीं आपने जब वो किसी लगाए तो आप समझे मैं माउंट एवरेस्ट कभी नहीं देखी, तो मैंने पहला काम क्या किया कि माउंट एवरेस्ट के वीडियो देखने शुरू किए वर्चुअल रियलिटी में। मुझे आपको मैं बता सकता हूँ कि 2 पॉइंट के बेस कैंप किधर होता है, उससे कैसा नजर आता है, फील आती है 50-60% फील आती है। मेरी बहुत अच्छी कुलीग है हीरा, वो हमेशा कहती है कि मैं तो जानूंगी मेटावर्स को जब आप मेटावर्स में खाना भी खाएं। हम अभी तो कि खा सकें, मगर देखिए हवा की फील नहीं होगी अभी आपको, क्योंकि हमारे वहाँ होते माउंट नीचे तो वहाँ पे हवा भी चाहिए होती, तो वो तो नहीं है सारी बात पे, मगर जो आंखों से नजर आता है और कानों से भी जो अभी भी कानों से आप महसूस करते हैं, वो सब महसूस आपको तो वो मैक के थ्रू और उसके थ्रू। और आप मिसाल के तौर पे आप नॉर्मल चीज नहीं देख रहे। टीवी में खराबी क्या है कि आपको कैमरा मैन दिखाना चाह रहा है, सिर्फ वो देख सकते हैं, वो 360 डिग्री व्यू दे रहा है। फर्ज करें, मैं फोकस करना चाह रहा हूँ कि आदमी का सामान जो हमने रखा हुआ है, मैं इक्विपमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट हूँ, तो मैं इक्विपमेंट पे फोकस करूंगा, मैं चीजों को इग्नोर कर दूंगा। क्रिकेट में भी फर्ज करें कोई किसी एक खास बाबर आजम का फैन है, बाबर आजम मैं देखना ही नहीं चाह रहा बॉल, चाह रहा हूँ कि बाबर आजम कर रहा है, मैं उसको देखना चाह रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मान करूंगा अच्छा वो आ रहा है, सेंस कर रहा है, चारों तरफ कमू कैसे कनेक्टेड है, ये आई पॉसिबल नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर। ये जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें AI का बहुत मेरा हाथ है, इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज। और इस तरह आप कहते हैं तो ये दुनिया भर का पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए क्रिटिकल रीन है कि हमारे पास एजुकेटेड पॉपुलेशन है। इसलिए डॉक्टर आरिफ अलवी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने आज से 3-4 पहले ये प्रोग्राम शुरू था, मास लेवल के लोगों को ट्रेनिंग देना। मैं ये कह रहा हूँ कि माँ बाप है ना, अपने बच्चों को नई दुनिया की अगर याद नहीं करेंगे तो बड़ी रहेगी, पाकिस्तान के लिए भी होगी और इंडिविजुअल लोगों के लिए भी होगी। कितना लेट है हम ज्यादा लेट नहीं है, अगर अभी आप इससे अंदाजा करें, जबकि हमें इस तरह आयोजन नहीं करना चाहिए, मगर फिर आप जो दुनिया में कंपनी होता है, इस वक्त इंडिया की सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स $150 बिलियन है, 3 है, तो 150 में और 3 का होता है, बहुत बड़ा फर्क है। और हमारा सबसे बड़ा एजुकेटेड की अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, ये इससे मसला आता है, इंटरेस्टेड भी है, उनको जरूरत नहीं है, वो सारे खुद फेस पे पड़े और आपका बच्चे आपसे ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करते होंगे बल्कि सिखाते होंगे सारे खर्चे करवाने में तो बच्चे बहुत। मसला क्या है, जो हमारी पुरानी जनरेशन उसको ये समझने की जरूरत कि यहाँ पे रिसोर्स लगाने पड़ेंगे और उसकी ट्रेनिंग। अभी हमसे कंज्यूमर तो हैं, देखिए फेसबुक जितने पाकिस्तान में फेसबुक बहुत कमाया पाकिस्तान से, और कंपनियां कमा रही हैं, मगर हम यूजर एंड पे तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करने में, मगर प्रोड्यूस करने में हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आगे चल के और मसला हो जाएगा। अभी तो है ही, और ज्यादा मसला हो जाएगा। अभी गुफ्तगू चल रही होती है, कॉन्गो वायरस अफ्रीका से नहीं आ रहा, उनको जरा चेक करना चाहिए, आर्टिकल पता चल रहा हो किस जगह पे ये सिम्स पाए जाते हैं, लेकिन कोई नया वायरस आने वाला है, वो दुनिया के खित्ते को मुतासर कर सकता है, कि कोई आर्टिफिशियल जैसा कुछ काम हो रहे हैं? ये काम तो रहा है, थोड़ा सा ये हमारे ना अनफॉर्चुनेटली अगर हो पाता है ना इस मुल्क के अंदर, तो वो हमारे थैंक्स टू आवर आर्म्ड फोर्सेस हो पाता है। पॉलिटिकल विल का जो वैक्यूम है ना, वो हमें बड़ा डिस्करेज कर। आज IT इंडस्ट्री जिससे से बात करी, इंडिया तो चले बड़ा मुल्क है ना, आप कह सकते हैं कि बड़ा मुल्क है तो इसलिए उनकी ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गई, लेकिन फ़िलिपींस पाकिस्तान से भी छोटा मुल्क है, उस 24 बिलियन की एक्सपोर्ट है IT की। तो ये तो पहले तो ये है कि हम तो गुजारिश यही करते हैं, जो हमारी जो पॉलिटिकल विंग लोग जो हैं रूल्स, वो अगर इन्वायरमेंट अच्छा बन सकें तो इंटरफियर ना छोड़ दें, पहली गुजारिश है। अगर आज कोविड पे कंट्रोल हुआ तो ये एक NCO जैसा इदारा बना था। देखिए हमारे पास जो, अगर आप मेडिकल और इसकी काम के बारे में बात करें ना, उसका मैं एक चैलेंज को इसलिए जिक्र रहा हूँ कि उससे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल 18 अमेंडमेंट आई, 18 अमेंडमेंट से हुआ ये कि हेल्थ हो गई डिवॉल्व सूबों के पास। तो जो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है कि नेशनल स्पिरिट में कोई पॉलिसी बनाई जाए सर्वेलेंस की,
तो अब ज़ाहिर है उसकी आएगा ना, पंजाब की बात। तो ज़ाहिर करता हूँ इतना इंपॉर्टेंट आपका इवेंट, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं हेल्थ जैसे, इसमें एक नेशनल पॉलिसी बनना बहुत ज़रूरी है और उसकी कोलैबोरेशन इंटरनेशनल के साथ होनी बहुत ज़रूरी। दूसरी चीज़ आती है, तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी एनसीओसी के थ्रू, फोर्सेस के थ्रू, जी, वरना कोई पॉलिटिकल क्योंकि फोर्सेस ही एक वाह है ना पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में। वो यही देखिए इसी को तो डैमेज करें ना लोग आजकल। हो रहा है कि हर मुल्क की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। पाकिस्तान की जो ग्रेविटी है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हमारी रिस्पेक्टेड आर्म्स है। पूछे बस मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ। साउथ कोरिया की क्या है? साउथ कोरिया की मिच्योर डेमोक्रेसी है। ईरान की क्या है? नेशनल स्पिरिट है। ईरान में 30% से ज़्यादा जो लोग हैं वो अरब्स, टर्क्स और कुर्ड्स रहते हैं, किसी को नहीं पता। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, और ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे मुल्क की है, आज अगर देखें ये जो हमारे डिफेंस का एक सेंटर लगा हुआ है आर्म्स फॉर पीस के ऊपर से, और एक्सपोर्ट करने के बारे में और कोलैबोरेशंस डेवलप करने के लिए इस तरह मुबादला आएगा। इससे एक इमेज बिल्डिंग भी होती है। आज दुनिया के जनरल्स और सारे स्टेट मिनिस्टर ऑफ जो डिफेंस आए हुए हैं, तो आज वो पी का एक मैसेज लेके जा रहे हैं दुनिया में। ये चीज़ें साथ होना, कंबाइंड होना, और डेफिनेटली अगर आर्म फोर्सेज लीड करेंगी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो ये चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। और आज जो टॉपिक उठाया है वो भी आइडिया पे इन्हीं लोगों ने उठाया है जो आज सारे अखबारों की जीनत बढ़ाया, उनको थॉट प्रोवोकिंग पे आया हुआ है इसने। अच्छा, एक बात मैं बस थोड़ा सा बात को शॉर्ट कर, वो ये है कि आज जो फ्यूचर वॉर्स होंगी, आज हम हाइब्रिड वॉरफेयर से, पहले हम नेशनल वॉरफेयर पे थे, अब हम एक हाइब्रिड वॉरफेयर से गुजरे हैं, सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ों की, और आइंदा हमारे टाइम्स के अंदर हम जर्म वॉरफेयर से गुजरेंगे। और ये कोविड जो है ये इसके लिए बहुत बड़ी ओपनिंग कर रहा है, और इसके लिए सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं अगर ऐसी वबा कोई है या जानबूझ चलाई जाती है, और उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी। तो आपका ये जो प्रोग्राम है और लोगों को क्रिएट करे अवेयरनेस कि इसके अंदर शामिल हो, तो ना सिर्फ कि नेशनल स्टेट में बल्कि अपनी भी है कि इसके अंदर आके कैसे बिला सकते हैं दुनिया को पॉजिटिवली। चीज़ भी जरूर बताइएगा, मिसाल के तौर पे अभी जैसे कोविड आया था, उसमें बहुत सारे लोग बताते नहीं थे कि उनके घर में कोविड, कुछ बातें थे कि उन्हें हॉस्पिटल नहीं भिजवान। अब अगर ये जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके थ्रू कहीं ना कहीं कोई अप्रोच सकते हैं या कुछ सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है कि ये उनके लिए है, ये लोगों के लिए है, तो हम छुपा नहीं सकें। बिल्कुल कह रहे हैं, इसी वजह से जैसे बताया ना कि उसकी जो हमने वो भी हमने उसकी वो जो डाटा किया कि कोविड किसका था, जब हम एनसीओसी को रिपोर्ट करते थे, उसकी वजह से बहुत ही फ़ायदा हुआ कि लॉकडाउन्स लगे वो माइक्रो लेवल पे लगे, पूरे शहर बाद में बंद नहीं हो रहे थे, सिर्फ इलाके लॉकडाउन हो रहे थे। और इसमें थोड़ी सी हम सबकी अपनी जिम्मेदारी भी है। ये जो हम छुपाते ना चीज़ें, ये अभी बड़ी गलत है। एक चीज़ मैं ज़रूर बात को ख़त्म करते हुए वैक्सीनेशन के बारे में बोलूँगा। ये जो अब आपने बात की ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें इंसान को भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। वो सीखना ये चाहिए कि आपको मैं बताऊँ कि मैं तो इन्फेक्शन कंट्रोल स्पेशलिस्ट हूँ, मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि वैक्सीन लगाने से जहन तो मफलू नहीं हो जाएगा, आँखें बंद नहीं हो जाएंगी, दिल की धड़कनें तो बंद नहीं हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, डायबिटिक हूँ, बीमारी तो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाएगी, जिगर तो नहीं फेल हो जाएगा। हमारे लोगों को ये परेशानी थी कि बच्चे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ये जब एजुकेशन से रहेगा, और अगर हमने आज एजुकेशन नहीं और लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं हुई, तो डेफिनेटली ह्यूमन फिर रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं और उसको अपने आप को स्ट्रॉन्ग है और अपनी विजडम लेके आएँ। बिल्कुल, हमारे यंगस्टर आपकी जानिब से जाएगा, क्योंकि डिस्कशन चीज़ तो क्लियर हो गई। कोई एक डिपार्टमेंट, कोई एक शुबा ऐसा नहीं है कि जहां पर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ज़रूरत ना पड़े। कोई भी सेक्टर है, और बल्कि इस इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने तमाम कामों को और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो सर, ये जो जवान नस्ल आपको सुन रही है, उनके लिए पैगाम, ये आपका कैमरा है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि इस वक्त चाइना मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आई, इंडिया की एक मेजर पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आई है। आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं। बहुत सारी और भी बातें महंगात की, मगर मेन वजह है कि ये राइज ऑफ द मिडिल क्लासेस इन एशिया। अच्छा, जो ये मिडिल क्लास उभर के आई है, के पास पैसे हैं, ये सॉफ्टवेयर से और ऐसा कमा रहे हैं। ये चाइना में बैठ के एक बंदा जो है $1.5 कमा लेता है, जो कि पहले $200 था मिडिल क्लास में, अब वो अपर मिडिल क्लास का है, तो वो भी खाएगा। अगर हमने अपने आप को इंटरनेशनल इकोनॉमी से नहीं जोड़ा और इकोनॉमी से नहीं जोड़ा, तो मैं आपको बता रहा हूँ हमें खाना भी मसला हो जाएगा। और अभी भी देखें गोश्त कितना महंगा होगा। ये जो महंगात की है दुनिया में, वजह क्या है कि टेक्निकल लोगों के पास पैसा है, वो मार्केट से उठा रहे हैं सामान, और हम और आप जो पुरानी तरीके से जिंदा रह रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उसकी कीमत दे सके, तो क्या होगा? हम भूख मरेंगे, वो खाना खाएंगे।
तो अगर हमने जिंदा बचाए आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, हमें अपने सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, वेब3 जो लेटेस्ट ऑफ दैट टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे सारा भलाई है, दो ना अलग चीज है। भलाई तो से अमेरिकन और दूसरे इंडस्ट्रियल जो मुल्क हैं वो आ जाएंगे, हमें वो दूध भी नहीं मिलेगा, हमें वो छाछ मिलेगी यही की। तो अगर हमने अपने बच्चों को ट्रेन किया और अपने आप को ट्रेन नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात, सिर्फ ये बच्चों के लिए, ये जो बड़ी उम्र के भी लोग, मैं खुद 60 का हूँ, मैं तो हर रोज अपने आप को रीट्रेन कर, और मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरे साथ दो जो मेहमान बैठे हैं, ये दोनों भी अपना पढ़ के अपने आप को, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए हमारी उम्र क्या है, जो भी उम्र है, अगर नए दौर में जिना है तो नए तरीके से रहना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। थैंक यू सर, आप हमारे आइडियाज 2022 शो के मेहमान बने, बीटी के मेहमान बने, आपका बहुत शुक्रिया। और चीज अगर आप काम कंप्लीट हुआ या कुछ अगर कहना चाहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट असल में देख, हमारी आर्म फोर्सेस के लिए, मैं अभी नेशन की भी बात कर रहा था, हमारी आर्म फोर्स बात ये समझ रही है। देखिए, ने एक वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट बनाया है F-17, जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। जब ये पहली दफा, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में शामिल थे, तो मैं खुद भी हैरान हो गया जब मेरे उनसे बात होती कि माशाल्लाह ये मगर अब नया दौर आया है। आप 5th जनरेशन में तो सेल्थ और इस टाइप के, मगर 6th जनरेशन फाइटर में, 7th जनरेशन फाइटर में हमारे दुनिया के बेस्ट पायलट्स हैं। अगर बाय द टाइम 7th जनरेशन आएगी तो पायलट की जरूरत ही नहीं होगी। जो उस वक्त नए किस्म के जो 6th और 7th जनरेशन में, अभी वो एग्जैक्टली डिफाइन नहीं हुआ हुआ, मगर 6th 7th जनरेशन जो फाइटर है वो रोबोट्स है, वो ड्रोन्स होंगे, और वो ड्रोन्स की फाइट होगी, क्योंकि जैसे फाइट है वो 9 से ज्यादा बर्दाश्त करता है, ड्रोन तो 16 GB बर्दाश्त कर लेगा जब टर्न होगा। तो हमें हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अगर हम जिंदा रहना है तो मैंने बता दिया, आर्म फोर्सेस को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी, क्योंकि आजकल जहाज JF-17 F-16 में कोई मेजर फर्क नहीं, मगर जो F-35 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और उसका सॉफ्टवेयर, दैट इज द की। तो हमें अगर आना है तो हमें ये अडॉप्ट करना पड़ेगा। वेरी मच खान साहब, थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल अख्तर साहब, वेरी मच फरहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा मैं देना चाहूँगा, इस वक्त जिस तरह फरहान भाई फरमाया कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं, और ये मैंने कल भी जब इंटरव्यू दिया था तो इस पर मैंने एम्फेसिस किया था, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी आर्म फोर्सेस जो पूरी दुनिया के अंदर मानी जाती हैं अपने नज़्म ज़ब्त के एतबार से, अपनी कंट्रोलिंग पास से, अपने काम के एतबार से, तो कोई भी काम जिस तरह हर चीज़ के अंदर किसी एक चीज़ के बारे में एक्सपर्टीज होती है कि शख्स के अंदर, इसी तरीके से आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ हैं। इसके साथ साथ हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, जिस तरीके से ज़िया ख़ाब जैसी शख्सियात हमारे पास मौजूद हैं, हम चाहते ये हैं कि आर्म फोर्सेस इसके कदम आगे बढ़ाएं। अगर वो J-17 थंडर 11 पाकिस्तान के अंदर बना सकते हैं, सुपर मशाक तैयारे पाकिस्तान में बना सकते हैं, इस वक्त हम बेशर मुल्कों को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई वजह नहीं कि वो एक पूरी जनरेशन को डेवलप करें जो मेटावर्स, पाइथन लैंग्वेज और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक्सपर्ट हो। तो इसके लिए काम ये करना पड़ेगा कि आर्म फोर्सेस के साथ प्राइवेट सेक्टर को और खान साहब जैसी शख्सियत को आगे बढ़े, सैलानी जैसे इदारों को, JDC इदारों को, AD जैसे इदारों को आगे के इनके साथ काम करना होगा, करना होगा। इसके लिए एक पूरा लाहे अमल तैयार करना होगा, जिसकी बुनियाद पे अगले 2 से 3 साल के अंदर हम एक बड़ी तादाद IT एक्सपर्ट्स को पैदा कर सकें, और पाकिस्तान को IT की फील्ड के अंदर, जो हम इस वक्त इंडिया से हम कह रहे हैं या फिलिपींस से कह रहे हैं बहुत पीछे हैं, हमें इस तरह आगे जाना होगा। लेकिन उसके लिए कोर रिसोर्स जो है, मैं समझता हूँ कि नज़्म ज़ब्त के एतबार से, कटिंग के एतबार से, सिस्टम के एतबार से हमारी आर्म फोर्सेस को के अंदर अपना रोल प्ले होगा। रोल उनका हो सकता है। भाई आपका भी कोई एक काम जी? थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ ये अपने यूथ की थी तो मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ी जो अभी जो हमारी जनरेशन आई है ना, जी जनरेशन, ये थोड़ी हम लोग कहें कि व्हाट्स मी, क्या फ़ायदा है, कुछ में मेरा क्या फ़ायदा है। मैं उनसे सबसे गुजारिश करूँगा कि हम सब ने ट्रैवल की है और बहुत दुनिया देखी है और रहे भी हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से अच्छी जगह पूरी दुनिया नहीं है। आजकल ये जो टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, ये सारी एक्सपोर्ट करती है। अपने मुल्क से एक्सपोर्ट करें। आप यहाँ पे लोगों को जॉब सीकर्स नहीं बल्कि जॉब प्रोवाइडर बने और पाकिस्तान भी नाम रोशन करें और पाकिस्तान को स्ट्रेंथन दें। और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे तो यहाँ के जितने बच्चे हैं, अगर कोई बाहर भी आता है या सॉफ्टवेयर के लिए जाता है तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ऐसी चीज़ बनाएं कि जो वर्ड्स आपके हैं, जो आप किसी से मिट करें, उसको पूरा करें। बल्कि मैं गुजारिश करूँगा
अंडर कमिट ओवर डिलीवर और पाकिस्तान फर्स्ट। Thank you very much, Farhan Issa साहब. Thank you, Azullah साहब, and thank you, Ziaullah Khan साहब. An honor to chat with you. और आपके जो पैगाम गए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे. हमारे तीनों एक्सपर्ट्स को आपने सुन लिया होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस आइडियाज 2022 अगर मैं ये कहूँ कि चंद बड़े मकासद में से एक मकसद है तो ये बेजाना होगा. लेकिन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की दिखाई देती जो ज़ियाउल्लाह खान साहब ने एक जुमला कह दिया, अगर हमने अपने आप को, अपने इदारों को और अपने तमाम वो जो हमें जिंदा रखने में मदद साबित होती है उनको जिंदा रखना है तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक खास फोकस हमें ज़रूर देना होगा और हम सबको देना होगा. एक सेक्टर की जरूरत नहीं है, हर शोबे की ये बुनियादी ज़रूरत दिखाई दे रही है और आने वक्त में अगर इसका सहारा नहीं तो फिर शायद हम सब सहारा हो जाएंगे. यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इस आइडियाज 2022 के स्टूडियो से इजाज़त चाहते हैं. मज़ीद गेस्ट आते रहेंगे, गुफ्तगू होती रहेगी. जल्द मिल रहे हैं, जल्द लाने के बाद. Assalamualaikum. My name is Heather Hussain. I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of IDEA 2022 and we are launching it is Pakistan's first defense magazine. We are giving all sorts of media solutions which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time in Ideas and we look forward to see you at our stall in hall number 5. Thank you. Well, hello. My name is Ayhan Shanturk, and I am the Business Development Manager for Profan Defense Technologies. We're a Turkish company. Our company was founded back in 1995, and our core expertise and experience is in satellite communication systems. So that's satellite antennas, satellite ground stations, and those are the main products that we're promoting at this exhibition. So we can design and build all the way from 65 centimeters small satellite dishes, man-packed terminals, all the way up to 7.3 meter big stations. So as I said, that's our expertise. That's where our main experience comes from. But we're also an engineering company. We do systems integration. We have a very good software team supporting us in our activities. We have a materials science team helping us with the design of our antennas. And we deliver turnkey solutions to our customers. It's our first time in Pakistan attending an exhibition, and it's been a very fruitful period for us. I mean, we've been very busy for the past 2 days. We're busy today as well, and we're very happy about it. We're very happy about it. During the COVID period, we've been having a lot of online meetings or telephone meetings with our colleagues in Pakistan. So as I said, it's our first time in Pakistan, and it's a great pleasure. It's a great pleasure to be able to talk, face to face with our contacts, with our customers in Pakistan. Thank you very much. Thank you very much for everything, for your hospitality. It's been an honor to be here, and we look forward to improving our relationship with Pakistan. Thank you. अपने किरदार पर डालकर पर्दा इकबाल हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है. शायर मशरिक अल्लामा इकबाल. दिल खुदा का होना. It's 3 p.m. Assalamualaikum. My name is Heather Hussain, and I am the founding editor of Defense Guardian International. We are the media partners of Ideas 2022,
and we are looking which is sponsors international defense packs. As well as we are giving all sorts of media solutions which is related to the defense industry. And I hope you're all having a good time and ideas, and we look forward to see you at our stall in Hall number 5. Thank you very much. Bringing together stakeholders across diverse industries. The way exit offers a platform for G2G, B2G, B2B directions, joint ventures and investments in the defense sector. The strategic seminar will also be held to facilitate discussion of global challenges within the defense sector. The 12th edition of this will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. IDEA 2024 bring together stakeholders across diverse defense industries. The 4-day exhibition offers a platform for G2G, B2D, and B2B actions, joint ventures and investments in the defense sector. A strategic seminar will also help facilitate discuss global challenges within the defense sector. The dinner of ideas will be held from 19-22 November 2024 at Karachi Expo Center.
Park Global is basically running a buying house. We are facilitating with the different countries' buyers with Pakistan industries, and we are giving a one-window support so that visitors don't have to visit again and again the same stall or the same product. We facilitate them, and with shorter time we make the arrangements. And recently we make 2-3 deals with the Jordan government and Zimbabwe and Nigeria. And by the grace of Allah, we are very successfully running this Park Global Supply Solution. In Pakistan, Depot is presenting very good opportunity to all our potential buyers. And for the Pakistan industry, like small arms and textile industry, it is a big opportunity to produce the items world standards. For the Depot and Badar Expo, I am very thankful. They have provided us this opportunity for the international buyer. We are linking with them. Thank you very much all. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर एलिया है। मैं हेल्थ सर्विसेज एकेडमी में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर को हेड करता हूं। आज हम एक BIC की प्रोडक्ट जो कि हमारे वर्दी वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान साहब आइडिया था, जिसको हमने अमली जामा पहनाया है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर ने, और हमने एक ध्यान के नाम से एक बॉट बनाया है जो कि घर में बच्चा ध्यान रखेगा, उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन का ये AI बेस होगा, और इसके अलावा स्टोरीज सुनाएगा, उनके साथ इंटरेक्शन रखेगा, रिप्लाई करेगा, और बहुत सारे और टीचिंग में भी मदद देगा। शुरू में हमने ये प्रोडक्ट ऑटिस्टिक बच्चों के लिए बनाया था, लेकिन अभी 7 मंथ में हम ये प्रोडक्ट कंप्लीट किया है। तो अभी ये ब्रिगेडियर रफ़ीक साहब जो कि नेवल कमांडर भी हैं यहाँ कराची में, तो हम इनके हॉस्पिटल में भी इसको इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं। मेरा नाम असद माल है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। GIC पाकिस्तान की कॉन्ग्लोमरेट है, कंपनी है। हम आइडियाज़ का 2007 से पार्ट हैं, और मैं ज़ाती तौर पे तो सन 2000 से आइडियाज़ को देख रहा हूँ। जब इसके शुरू में 3 हॉल हुआ करते थे, I was one of the first exhibitors when ideas started. Really, I've had the honor के मैंने इसको देखा है होते हुए। 2022 है, अब माशाल्लाह 9 हॉल्स हैं। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है 2022 में, कि बहुत सारे देख रहा हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और बहुत सारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं जो इस पूरे इवेंट का पार्ट बन गए हैं। हमारे सेंटर इस वक्त मेरा ख्याल है कि 50 से ज़्यादा डेलीगेट्स मैंने खुद विजिट की हैं, इतनी ज़्यादा श्योर इन्वाइटेड होंगी। और जो एग्जिबिटिंग कंपनीज हैं, 9 हॉल्स अगर हैं, तो दैट्स के एग्जिबिटिंग कंपनीज पाकिस्तान में हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लोकल और फॉरेन। बहुत सारे और उनका इंटरेस्ट भी है इसमें। मैं देखता हूँ कि जो डिफेंस एग्जीबिशन हैं फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, एक बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म आपको देते हैं। आप आपकी डिफेंस कैपेबिलिटीज हर 2 साल बाद दुनिया के आगे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिलता है दुनिया से नेटवर्किंग करने का, बाहर की दुनिया को मौका मिलता है कि वो आज के जो वैल्यू कर सके। आज डेपो एंड बदर एक्सपो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं कहता हूँ कि अंडर देयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट they can take this platform and exhibition to new heights. So good to both of them. Thank you very much. Pakistan Zindabad. अस्सलाम, मेरा आतिफ कटाना है और मैं GM कॉर्पोरेट सेल हूँ सर्विस इंडस्ट्रीज में। सर्विस इंडस्ट्री पाकिस्तान में 50 साल पुराना नाम टाई के हवाले से और शूज के हवाले से पहचाना जाता है। लोग आम लोगों के जो जूते बना रहे हैं के अलावा हम लोग इसके लिए जूते बना रहे हैं जो कि कंप्लीट रेंज है नेवी के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, रेंजर्स के लिए और पुलिस के लिए। इसके अलावा सर्विस इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में कुछ और चीज़ें भी बना रही है जिससे बहुत कम लोग जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लोग आर्मी के सियाचिन में जो शूज़ इस्तेमाल किया जाता है, के शूज़ भी बना रहे हैं।
इसके अलावा हम गैस आर्मी के बना रहे हैं जो पाकिस्तान में सिंगल सोर्स है आर्मी के लिए। इसके अलावा हम लोग अल्खर अलजरार के लिए कुछ पार्ट्स भी बना रहे हैं। रिसेंटली हमारा एक डेवी हुआ है चाइना की कंपनी लॉन्ग मार्च के साथ, और पाकिस्तान में पहली बार ट्रक बस रेडियो के जो टायर मुतारफ करवाए हैं वो भी सर्विस ग्रुप की तरफ से करवाए गए, सर्विस लॉन्ग मार्च की तरफ से। इससे पहले ये सारे टायर पाकिस्तान में इंपोर्ट किए जाते थे। पाकिस्तान में मार्केट साइज ट्रक बस रेडियल तकरीबन 2 मिलियन के करीब है एक साल, और हम लोग जो प्लान करके पाकिस्तान में ये फैसिलिटी लेके आए हैं, हम इंशाल्लाह थर्ड फेज में आज से 2 या 3 साल बाद 0.4 मिलियन की कैपेसिटी एक साल की बना रहे होंगे। और मार्च में ये इनॉग्रेट हुआ है, और इस वक्त हम अमेरिका को पाकिस्तान से बना के छोड़े हैं, जो कि पाकिस्तान के फख्र की बात। आइडिया वाले से मैं ये बात करूँ कि ये बहुत अच्छी एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत से मुल्क से लोग आते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता चलता है, और दुनिया को ये जानने में आसानी होती है कि पाकिस्तान भी बहुत सी चीज़ें अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नो डाउट एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी एक्सपोर्ट के लिए भी है। I'd like to start with extending my thanks, and I'd also like to say Assalamu alaikum to all the dignitaries, Chief Guest, for example, our Chief Guest Admiral Shahidullah Saab, Senior Vice Admiral Ahmed Saab, and members of the business community, all others present over here. Assalamu alaikum, and thank you for granting me this audience today. We'll be talking about the challenges of shipping industry from a private sector perspective and how that relates to other stakeholders. The area of focus of this presentation is the energy supply chain. And the reason why I have chosen this topic is because I truly believe that energy is the biggest security factor in any country, especially in Pakistan, that is heavily dominant on and reliant on energy that is being imported. Our energy comes from crude oil, from LNG, from coal. We do have indigenous local sources that we are developing, and I hope that goes on and becomes a good percentage of our energy mix. As of today, we are a nation that imports the bulk of its energy and is reliant on imports. And that import is done through the shipping routes, through the shipping supply chain. And if we resolve those inefficiencies, some of the inefficiencies, and we are also able to capitalize on our existing shipping infrastructure, on its utilization, we can make our energy mix and our energy supply chain much better, and we can be operationally and economically efficient in managing our energy. As you already know, energy impacts all of us, from the gas in our cooking stoves, to the petrol in our car, to the gas and other sources of energy that we need to run our industries, to run our Navy fleet, to run our jets, and so on and so forth. So it is a very important factor for any nation. That is the reason why I have chosen this topic. I will be giving a few examples that will show us two sides of a coin about how we are, it will show us why we are inefficient in some ways, and how on the flip side, by taking some small measures, we can become much better and much more efficient. So first of all, I would like to just present impact of inefficient energy supply chain, or the impact of high energy costs. So there are 3 components to the energy supply chain, broadly speaking. One is the product. The product is imported and its price is driven by international. That is not something that's in our control. Second, our shipping costs, which is something we can control, because a lot of our energy can be transported to the Pakistan National Company and repeat, and we can manage our shipping that way. I'll come address that point later in the presentation. The third part is the supply chain, the berths, storages, the discharge methods, the pipeline activities. These 3 make up the energy supply, broadly speaking. So a high energy bill translates into inflation, into a current account deficit, where there is devaluation, where we face inflation because of the devaluation, and that leads us to certain sort of debt crisis every now and then, and also encourages hoarding, because there is an shortage of commodities and energy products, and that leads to a certain sector which hoards the current inventories and aggravates the situation rather than help it. So if I talk about the oil, I'll be focusing on 2 products in my presentations. I don't want to bore you too much on this Sunday morning, so I will try and keep it simple and not too dry. So I've chosen oil, and I've chosen to speak about coal, give you insight and a holistic view about what can be done. So if you talk about oil imports,
We have two ports mainly that cater to our oil ports: crude oil, fossil oil, petrol, diesel. All of this comes through Port Qasim and Karachi Port. I'll talk about Karachi Port. Port has number of ports. We have OP1, OP2, DB1, DB2. They all discharge chemical, petrochemical, and oil cargoes. So we have multiple berths over there. And most of the time, you'll find that there are idle berths at KPT for discharging oil and related products. However, the storages in KPT are slightly inefficient. They haven't developed. The infrastructure, the pipeline connectivities has not been done over the last 10, 15 years. Now, in contrast, if I talk about Port Qasim has very efficient storages. It is linked all the way from pipeline to Punjab. It has storages. It has a good mix of storages, but it only has one berth to discharge oil cargoes. So you see how KPT has inefficient storage, but multiple berths. Port Qasim has one berth and multiple storages. So the problem and the solution are sort of one and the same, in the sense that if we connect the both ports, if there was some sort of connectivity between both the ports, they could benefit of that synergy. They could benefit of that. Both does not need to make more storages, and KPT does not need to make more berths. Collaboration, a synergy, a little bit of discussions between both ports will resolve the problem. So without spending much, we will be able to capitalize and increase the capacity utilization of the existing infrastructure. So that is a little example of how we can about it. Just to give you a little bit more insight, there are vessels that call on Port Qasim. There is empty storages at Port Qasim available, but due to just one berth discharge one at a time, we have to 5 to 10 vessels waiting for the berth in countries, sometimes to the tune of $100,000 per vessel, sometimes higher. You build that up onto 10 vessels, that's $1 million. And obviously for a country that is working on its foreign exchange reserve, such a situation can be avoided, should be avoided. And there is another port which is not too far away from Port Qasim that has multiple berths. All we need to do is connect them both, so we can discharge 4, 5, 6 vessels at one time. We can store our energy, we can be more efficient. Talk about coal a little bit. We are developing third coal, and I think that is a very good initiative. That is something that should go on. It should become a bigger percentage of the overall coal mix. That will help us not be reliant on imported coal, something we should all prefer. However, the reality as of today is that in 2021, Pakistan imported 16 million tons of coal through seaborne. And it is expected that with the added power plant capacity and expansion of the cement sector, this will go up to 25 million tons over the next 2 years. That 16 million tons translates to 290 vessels per annum, approximately. That's 24 vessels per month. And during proceedings of the Supreme Court in 2018, there was a decision was made where all coal imports were destined towards Port Qasim to a single purpose custom-built terminal, which is fine. However, the terminal also has one berth. It can only discharge one vessel at a time. The time that terminal was being built, Pakistan imported less than 1 million tons a year. Now we import 6 million tons a year. The capacity is not enough. The vessels, they wait outside during high traffic season, and they incur, again, damages up to $150,000 per annum, per vessel per day. I'm sorry. And that increases our import bill. And at the same time, another port, KPT, which is an hour away from Port Qasim, has idle berths lying there that can discharge coal, or a purpose-built terminal can also be developed at KPT, or some kind of railway connectivity can be done so that the discharging from the vessel onto the land and forward on the trees is much more efficient, and we don't pay extra dollars for our energy. So if I was to sum up the gaps, if you realize both the topics that I talked about, KPT, Port Qasim, crude oil, coal, we aren't talking about any new projects that we need to do. The idea that I'm trying to float over here, I'm trying to give a dissected bird's eye view that we have the capacity within the realm. We just need to have a smarter approach. There's a concept of smart hub or smart port, which basically talks about how ports can talk to each other, how they can share data on one dashboard, and they should use that data to deploy their capital in a much more efficient manner. So in efficient capital deployment, where one port has an existing capacity which is idle, and the other port is spending more money to build the same storage facility or the same discharging facility, is inefficient capital deployment. A little bit of synergy that we can build between both the ports, between the authorities, that will help them deploy their capital in a better way and also make themselves much more efficient by building those synergies between themselves. Another initiative or another drive that we need to focus on
is the impact of PNSC, the Pakistan National Shipping Corporation. The Pakistan National Shipping Corporation is a hidden gem that we must focus on. It is the only company in Pakistan that charges its freight in PKR. We don't have any other. If we want to pay for our shipping costs in Pak rupees, we don't have any other option except PNSC. So PNSC should be supported to increase its fleet so that it can to maximum energy import. Its focus is already on oil and crude oil imports that come into Pakistan. It should increase its fleet. We are trying to increase its fleet. We are talking about how PNSC should be allowed to procure second-hand vessels. It should be exempted from PEPRA rules so that it is able to increase its fleet and we don't have to pay for our shipping costs in dollars. We pay for them in PKR. In fact, if we build excess capacity of PNSC fleet, PNSC will not only be able to reduce our shipping bill, it will be able to bring in foreign exchange by selling its freight and vessels to the foreign market. Also, if we are efficient and we build this synergy between ports, we would be able to benefit from low commodity prices. We all must remember COVID hit, oil went down to $20, coal went down $40. China and others in the region who had efficient energy supply chains, they bought commodities at very low prices, stored them and benefited off them when prices were high. We've seen the same issue with us in LNG. When the prices are very high, we are unable to purchase them and that leads to a gas crisis. So that is another thing that we need to focus on. The government's part, obviously, a little bit of activism, a little bit of synergy, sharing data, flow of information. I think platforms like NEMA are a great platform where all of these authorities, stakeholders can get together, share their views, help give a holistic view, a bird's eye view, rather than working in small pockets. We share information, share the data, and we can help spend less and become much more efficient. Also, incentivizing the private sector. And in the private sector, I would always say that we should support local companies. PNSC is a great example of how a local company is benefiting us for the same services that we could have taken from international companies. That does not mean that we should discourage international investment or JVs, but local companies should be incentivized to build railway routes, shipping routes, terminals, ports, and multiple of those facilities so that there is more competitiveness, less monopolization, and the market should become more efficient automatically once there is more competition. So that would be all for me, and thank you very much for your time. It is 2020, together stakeholders across diverse defense industries. The Forex offers a platform for G2G, B2G, and B2 directions, joint venture and investments in defense production sector. A seminar will also facilitate discussions global challenges within defense. The 12th edition of Ideas will be held from 19 to 22 November 2024 at Karachi Expo Center. Assalamu alaikum. My name is Ahmad Askari. I am business head of dynamic engineering automation. You can see मेरे पीछे देख सकते हैं ये हमारे यहाँ पे we are a company जो हम alternate gas solution देते हैं पाकिस्तान अपने के स्वी गैस है वो पाकिस्तान में नापे हो रही है उसी को सामने रखते हुए हम पिछले कोई 10 साल से उनके साथ 11 साल हो गए हम alternate गैस solution दे रहे हैं जो कि एनर्जी नेशनल गैस को रिप्लेस करते हैं LPG बेस्ड सिस्टम होते हैं अब तक हम कोई तकरीबन 60 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल इदारों में और तकरीबन 10 से ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये गैस का सोल्यूशन दे चुके हैं जहाँ पर स्वी गैस नहीं होती है वहाँ पर हम LPG बेस्ड SNG सिस्टम देते हैं जो कि बिल्कुल उसी तरह से गैस पाइपलाइन में ट्रैवल करती है जिस तरह की नेशनल गैस ट्रैवल करती है और वैसा ही एक मीटरिंग सिस्टम लगा होता है और इसी बिल्कुल सेम बिलिंग होती है इसमें से अब तक 8 प्रोजेक्ट हम SSGC के प्लेटफॉर्म से लगा चुके हैं और 2 प्रोजेक्ट अभी हमारे जो लग रहे हैं वो SNG पे में लग रहे हैं सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा SNG पे लगा रही है गिलगित के लिए पूरे गिलगित शहर पे हम ये SNG का सोल्यूशन दे रहे हैं और अभी रिसेंटली कराची में हमने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है 8000 घरों के लिए वो बैरियर में है जहाँ पर बैरियर टाउन के तमाम घरों को गैस पाइपलाइन के जरिए गैस मिलेगी और मीटर से जरिए तो उनको बिलिंग की जाएगी वो बैरियर टाउन का अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट है और जो गिलगित का प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है आईएस में भी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एग्जीबिशन पर हम करते हैं पाकिस्तान से बैठ के हम UAE में और अफ्रीका में भी काम कर रहे हैं So my speech today will be about artificial intelligence and its solution in the market.
if you can please have the slides. So in the meantime, while it's displayed, I could probably engage you that you might have heard the word Industry 4.0, and here the manufacturing industry, for example, or in the broad sense, the world works is actually divided into four times of 4 periods in which science is prevailed in different ways. So the most recent one, the Industry 4.0, actually it comes out in Industry 3.0 era of robots, and this one, the era which is post 2015, is more about intelligence with all sorts of things. We keep hearing stuff like Internet of Things, for instance, big data, for example. We keep hearing about cybersecurity. We keep hearing about so many other areas. And basically, at the back of all this, without artificial intelligence, nothing would actually work. Because what do we do with all the data that we collect with IoT, for instance? If there is no AI behind it to actually process the data and take any decisions, then what's the use of having all that data? Similarly, there are proven examples of, for instance, medical science. There's research back even in the 90s. This is before the invention of learning, for example. The normal machine learning, complex medical problems were actually solved. The third aspect is that artificial intelligence in the current world, the world of AI, is perceived as, most of the applications of AI that we see are in the area of perception. That, for example, we have some data, we're trying to make sense of that data, and we're extracting some information and, presenting it, in a way that is useful for humans to actually process or make decisions. The actual manifestation of artificial intelligence is in the form of real life agents and real life things which actually implement AI in the real world. And that's most obvious when it comes to products. For example, we all know about the Loyal Wingman project, for example, for the Air Force, which the US Air Force has. That, for instance, that they have already succeeded in flying an F-16 autonomously, right? So the Loyal Wingman project focuses on, a wingman flying with a real pilot, and the plane being totally pilotless. And a lot of the decisions to be taken by the Loyal Wingman basically depend on the data, but they are real-time decisions which have elements of all sorts. The implementation of AI can come from search-based algorithms, it can come from logic-based algorithms, and some aspects of it can come from the machine learning algorithms as well. So AI has a lot of paradigms, and one basically needs to know which paradigm to apply in what sort of a problem, in what way. For this reason, what usually is said is that AI is as good as the mind behind AI that actually writes the program, right? So the more the comprehensive the data is, and the better the mind that is actually writing the artificial intelligence code, that actually, gives us the manifestation of how an algorithm of artificial intelligence will come out. So taking the privilege of the slides being late and being able to talk to you freely, I can, tell you a little bit about the AI seminar, which has been a big effort with C4I and with Depot, and it's had several legs. So it has two components. One component is today, another component is tomorrow. So the first component, which is today, is with 4 keynote speakers, them foreigners who have actually made time to come to Pakistan, and Dr. Nawaz Shamsi is a very prominent speaker from Pakistan side. So it's a privilege for me also to speak here. And tomorrow we're going to have presentation from, it's a competition-like format in which papers and projects, ideas have been invited from all over Pakistan, and people have competed against the project. So it's 143 submissions. From there we came down to 70 after evaluations. After 70, the next stage of evaluation, we went down to 16. And after 16, we have the top 6 basically projects and papers which are going to be presented here. So great effort done by Depot and C4I with some input from the National Center of Artificial Intelligence. And it's good to see that AI, the importance of AI is finally being felt in Pakistan. I always say that in every department in Pakistan, we need at least a think tank which thinks about applications, or you could say technologies which are useful, in the form of including emerging technologies. At the back, automatically there will be artificial intelligence, and there will be a lot of instrumentations and sensors, etc., which will be integrated in different departments as well. AI is, by the way, not a new area. AI has been around for a long time. I think since there are successful examples of artificial intelligence being applied even as old as the Second World War. And the reason why AI has become more significant right now is the advent of a lot of the computational resources as well. And you see that there is a lot of new resources are evolving, and the defense technologies are becoming more and more advanced with artificial intelligence now, incorporated in them. So now that we have the slides, let me finally begin with them. So formally the topic of my presentation today is the evolution of artificial intelligence technologies in defense, the overview of the market, dynamics, and trend analysis. Next, please. Next slide, please. Okay, so a little bit about myself. So I've been passionate about computers and about programming since my early school years. Actually, I started my programming, I think I was in the 5th grade when I started writing programs. And my first attempt at writing a research paper was in the 9th grade in school. So
I've been teaching the AI and robotics at NUST. Actually, I founded the department of AI and robotics back in 2009 at NUST after my PhD from Japan. And this is the oldest program in artificial intelligence and robotics that exists in Pakistan with this title as well. And right now, I'm the chairman of the National Center of Artificial Intelligence. Next, please. So this is a glimpse of some of the research which predates NCI that I've done. So just to give you an idea which background I'm coming from. So I'm really fond of putting artificial intelligence into real life systems and into machines that actually act in the real world. For example, the robots that you see on your left and my right, these are the humanoid robots playing soccer completely autonomously. So this is one of my famous projects that was covered in media a lot. And this was about 6 robots on one side, 6 robots on the other side, and they're completely playing with each other autonomously without any human intervention, without even connecting to external computer, with a pre-trained algorithm which we actually train and we feed inside the robot. And they, work by themselves to realize where the other robots are, where the goal is, where the ball is, and independently make strategy to actually score a goal and to also defend their own goals. There are technologies for rehabilitation which we've made for Sakura wheelchairs of Japan. There are other projects, for example, this prosthetic hand project which we worked with AFIRM. And this one has tactile sensation which actually gives back feedback to humans. And actually on 2 of these, like the soft tapping and the hand projects, we won Best Paper Awards in London and Sydney as well. So the prosthetic leg you see, this is also AFIRM actually. So this is an adaptive leg which actually adapts to the walking speed of the person. So a lot of other projects like that. This is just a glimpse of the sort of projects that we do. Next, please. So the organization I'm currently leading is the National Center of Artificial Intelligence. This is a competitive grant awarded through the Higher Education Commission of Pakistan. And it's like in 2016, the government of Pakistan issued a call to all the Pakistani universities, all the professors, that everybody, whatever they're doing in artificial intelligence, they come forth. And looking at their research, looking at the background of their work, they awarded funding to 9 labs across Pakistan. I was very fortunate to be one of them. And then again, through competition, select which one person should lead the whole center. So right now, like I'm leading the center as the National Center of Artificial Intelligence. 9 labs are there, and we've also awarded 12 research-funded projects in different domains of artificial intelligence. So we are very applied. We actually implement AI, and a lot of it is deployed in the real world as well. Next, please. So come to artificial intelligence and its significance. We see that the financial impact of artificial intelligence, this thing for Forbes is actually very insightful, that it is forecasted to add $15.7 trillion to the global GDP by 2030. The main reason is that this technology is general purpose. It has applications that span industries like healthcare, transportation, like financial services, energy, so on. Some consider AI to be on par with what we saw with the evolution of electricity in the 20th century. So this is the reason why everybody keeps saying that AI is so significant. Some say that AI is as significant as electricity. Some say that AI is the most important invention that human beings have ever worked on. So they're saying, for example, that whoever leads in AI will rule the world. So all this buzz around intelligence, what's so special about it, and why is this the case? And then how does this apply to defense? Next, please. So let me share with you a small quote that I actually extracted from the letters which 3,000 researchers from around the world actually sent to the UN. So this is like the quote reads that autonomous weapons which threaten to usher in the third revolution in warfare after gunpowder and nuclear arms will permit armed conflict to be fought at a scale greater than ever and at time scales faster than humans comprehend. So this is the perception about AI right now, particularly with focusing on defense, right? That the scale of the war and also the speed of the war will go completely beyond the way that we've been fighting wars before. And with complete autonomous systems, we've all seen how the Iron Dome has worked in the recent conflict between Israel and its neighbor, Hamas as well, the Palestine. And we've seen how artificial intelligence-based systems are real-world systems applied in real life right now. There are others, for example, we've got the Loyal Wingman project, autonomously flying plane, for instance. We've got Valkyrie. We've got so many other land systems. I didn't show naval systems here, but there are autonomous ships as well. There are submerged vehicles too. So there are helicopters. This, for example, this is like a Black Hawk helicopter. So this is Project Elias. Also, there are like land machines also. This Mars project, for instance, this Hermet, for example. So all of these projects actually are autonomous agents work in the warfare strategy, and they actually also not at just this level, also at tactical level. I'll come back to that in the next slides. So at the tactical level also, that all these things integrate together, and there is a tactical framework as well with which you actually, using the AI governance framework, you can actually apply artificial intelligence toward the strategy of the war as well. Next, please.
So drones are an example in which artificial intelligence has been applied extensively, and there are so many examples of drones. Of course, several of them are operated, but the real manifestation of drone technology is when the planes actually fly autonomously. Right? So this is one of the application areas of artificial intelligence as well. These are some of the AI-powered drones. Next, please. So artificial intelligence applies to various segments. Like I've shown you some of the machines that work autonomously within the battlefield. But AI goes well beyond that, actually, some of which you will see as examples in the papers being presented tomorrow as well. So there are, for example, mission-specific battlefield robots. Some of the pictures I've shown you. There are unmanned aircrafts. There are the formulation of the governance of artificial intelligence, AI-based governance framework, and tactical design systems. So there are unmanned vehicles and weapons with hybrid remote operation capability. There is unmanned tanks and UGVs. There are like multi-aircraft coordination and control technology. Then there is autonomous underwater surveillance systems, and of course the marine surveillance systems in general, and autonomous land obstacles and mine detectors. So this is just like some of the aspects of artificial intelligence. Actually, AI extends well beyond that. For example, one of the projects we're doing not directly for defense right now, it's mostly for the civilian maritime sectors, is focusing on how, for example, humans are dealing with so many new technologies and why some of the accidents that are taking place with all these automated machines are because of human error, and how we can improve that using artificial intelligence, right? So AI extends beyond, the core areas in which there are applications. Next, please. So if we look at statistics, if we look at numbers, right, because there are some analytics involved as well, the market share in defense, particularly for the defense AI market, because this is the depot, this is defense export promotion. So if we look at that, the market is expected to grow at an compound annual growth rate of 3.4% annually. This is according to the emerging. And this is the software market. If you look at the hardware market of artificial intelligence, because AI requires, computational capabilities to be developed at the same time as well. And now for a lot of, this is probably one of the major applications other than the mobile phone industry, where a lot of hardware is being designed, looking at what sort of software is going to be deployed on this hardware to efficiently run that. So in the hardware industry, there's another 13.6% growth, the compound annual growth rate, CAGR, expected for the hardware industry itself. So if you look at, for example, the global market share, so it's like 28.8% of global market revenue was accounted for that in the Asia Pacific region. But there is, so far, the development of AI is fragmented. It's not just one place. And actually, Forbes did a very famous article in January 2019 in which they compared the American capability with Chinese capability and assessed which thing is better where, right? Particularly for like artificial intelligence technologies. So hardware and software both. So next, please. There are statistics as well. For example, in case of the global newswire, they say that the growth is not going to be 13.4%. Their assessment is 12.9%. There are other studies which I did not include in this presentation, but for North America, for example, or certain regions, the growth rate in artificial intelligence actually exceeds 30%, right? So it's like really huge growth. Wherever people are coming, applying artificial intelligence to the industry, so huge growth rates are expected there. So this is what I was talking about, that apart from development of autonomous and intelligent weapon systems, it is like efficient information, you could say, retrieval, the deployment of sensors and the information which is coming back to you, the raw intelligence which comes from the real world data, and also the automation of multi-sensor data fusion and intelligent sensing techniques to leverage better situational awareness. And once you have the situational awareness, then you can get to the tactical level, right? So cloud-based integration of land, airborne, and naval assets into a battlefield management system to leverage technical capabilities. So this is also something which is being worked on by artificial intelligence, like developers who are developing systems-based AI. Next, please. So the way AI works actually is that we have at the bottom level, like I think PF Syntyke will relate to it very much, that the way that this AI works is that at the bottom level there is infrastructure, of course. So like they say the hardware as well as the core software, infrastructure in which, for example, you need a lot of data to be fed to artificial intelligence through a lot of sensor networks. You require, this can be mobile, this can be cloud, this can be Internet of Things, the things I was talking about right in the beginning of my talk. Then on top of it, you've got cognitive systems. And then on top of it, you've got applications. So the good thing is that, a lot of applications which are, for example, application areas may be particular to defense, don't need generation of entirely different kind of algorithms. Like, for example, if something has been worked on in the civilian domain, it's also very much applicable to the domain as well. So, for example, if you want to do object recognition or you want to do any activity recognition, for instance, the algorithm behind that activity recognition will be the same, even though it is applied to the military application as well. So we can leverage a lot of things, like there's transfer learning and so many techniques that are available to actually use, the kind of knowledge we generate in one kind of scenario. And actually, this is the reason why some of game kind of scenarios are generated, where multi operate with each other. I actually want to use this scenario for machines in the, for example, tanks in the field or aircraft in the air to actually collaborate together, share information with each other, and actually fight in the real world scenario.
So if you look at, for example, segments which artificial intelligence is hired and the impact which comes from different areas, right now 9.6% firms are investing in the science area, 7.8 in the business intelligence area. Then there are health plans and patient care, computer vision, recognition, aerospace and defense industry. So this is particularly aerospace-related defense industry. Otherwise, applications of defense are in all computer vision. Many applications are in the defense industry. So natural languages processing, entertainment, and the list goes on. I could like throw just on this. Next, please. So coming to the National Center of Artificial Intelligence, let me give you a glimpse of some of the projects we are doing and, with artificial intelligence. And of course, many of them are on the civilian side. And of course, some of them have applications toward the defense side as well. So we've been able to generate the product concepts, proposals that we generate are, 221 so far. And we are touching nearly around 635 million in funding that we've generated during the last 3 years. So the kind of projects that we've done and deployed reach around that. So we just were inaugurated in March 2018. The first final releases came in 2019. You can imagine that it's just 3 years of work that we're actually displaying before. Next. So one of the major projects, for instance, was collaboration with the Law and Justice Commission of Pakistan to develop artificial intelligence for judiciary. This could be very useful for the military courts as well. So for instance, what we've done is digitize data from the 70 years history of Pakistan. And whenever a new case, for example, comes in, you can interact about that case into the system. And the most relevant case from the database, from the 70 years history of Pakistan database, they actually come up. And even if the decision is made directly by the judge himself, like AI, of course, does right now, the system, AI does not suggest a judgment. But even in that case, for example, relevant cases coming in front of the judge can help them make a more informed decision, right? Thank you. Next. So I'll just, go quickly through the slides. We work very closely with Pakistan Air Force, establishment of the CENTAC, and we have good close collaboration. Next, please. Next. So this is one of our projects which will be laid in detail tomorrow by one of our contestants in the competition. And this is a medium.ai. It's a company spin-off from there. This actually looks at all the media channels. We know that fifth generation warfare actually not just in the battlefield, but every home, right? With the digital devices and television and everything coming to everybody's hands. And this, for example, documents whatever is being said by any person who is saying what all the content analysis behind, giving you a complete summary of what is happening during the day as well. So complete perception of whatever is going on in the media. Next, please. Many of these technologies have now spun off into companies like the last one. And for example, the system will, for example, detect various vehicles. Some of the application example for parking spaces. Next, please. So this is the one for pickets, for example, like how many suspicious vehicles or persons could any human possibly remember. So this is AI-based system which is actually reading the number plates, actually looking at the make and model of the car, and based on that, it can extract which kind of vehicle, for example, needs to be stopped. If a suspicious vehicle comes in, it can relate back with the database and stop that vehicle right there. Next, please. This is another system, for example, in which you detect weapons, for instance. This is object. You're actually detecting weapons. And on the left and on the right, you see activity recognition. So, for example, one person is crossing, in a different side, like not walking the direction where everybody is going. So this is statistical modeling of the dominance in the scene. We can actually predict with a lot of accuracy where somebody is doing something different from the crowd. So this is good mob analytics. Next. So this is an example of what we do with the mob analytics. So many persons are there. Whichever persons, for example, are holding sticks are pointed out separately, right? So on the right, you can actually distinguish activity recognition. For example, two persons are fighting with each other, or for example, a gun is being pointed because, in a real scenario, guards are always going to be carrying weapons, right? So detecting a weapon only may not mean a lot, but something being done with the weapon actually means something, right? So this is why, for example, this is activity recognition. And when the gun is pointed at someone, that's when we raise the alarm. Next, please. So this is like just a glimpse from the lost and found system that we've been able to deploy with the Punjab Safe City Authority. And I'm happy to share with you in the past, in one of the very major events that was taking place in Lahore, we were actually able to catch some of the miscreants in the artificial intelligence face recognition technology using our completely home developed systems, actually. Please. So these are medical applications, some system that we've developed for thalassemia detection and assessment, another one for breast cancer. Next, please. So these are two systems. BrainBase is a very popular system for brain like tumor detection and cancer anticipation, lifespan prediction, and also for tuberculosis, COPD, and other pulmonary diseases. Next, please. Just actually a day before yesterday, our system has been deployed in the PIMS in Islamabad.
So another initiative which, for example, you all know about is AI Techverse competition we organized. So this is, initially it was scheduled in the States, but we moved it forward because of ideas, and it's going to be scheduled inshallah in the coming February. Inshallah. So if you want to, for example, we are going to sponsor a prize money of ₹1 million in this for the winner. And if some company wants to sponsor, for example, a particular challenge that you want to entice people to develop a product of this sort, and you offer prize money for one best product, you're welcome to contribute to this. And otherwise, you can do it. Next, please. Also, like to address the need of the defense market and particularly the shortage of AI human power, which could actually develop efficient algorithms, a professional level human manpower which is required. We've started this Certified Artificial Intelligence program, the CIP certification. So this is an expert level certification. If you want your team to enroll in this, you want them to have the expertise, it's a 4-month long course in which they can develop their expertise. Doctor, last 2 minutes. Always, sir. Okay. Next. So this is my contact information. If any one of you would like to contact me, so you're very much welcome to do that. I got the a type of reminder. This is why I really hurried up the things. Thank you very much. I hope you enjoyed the talk, and I hope we interact and get on some real AI stuff together. Thank you. मैं असल में इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका, वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड की वजह से इफ़ेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्वमेंट होती थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है। और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उससे बेहतर लेवल पे जा सकें। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़। एंड पहली मरतबा जब आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड पर रख के काम करते थे। बट देन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे हैव बिकम टू गुड फॉर दिस इवेंट, एंड माशाल्लाह इतने अरसे के अंदर दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, एंड इंटरनेशनली बदर एक्सपो सॉल्यूशन इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट मैनेजर्स इन पाकिस्तान। बहुत अच्छा काम है। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। क्यों मन्नतें मांगता है औरों के दरबार से इकबाल, वो कौन सा काम है जो होता नहीं तेरे परवरदिगार से। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। आपके हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल। आज अपनी जिल्लत का सबब यही है शायद, सब कुछ है याद मगर खुदा याद नहीं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल।
इस फाउंडेशन की इस वक्त सॉल्व It's for Hello, greetings. I'm Badar. I'm director at Powerhouse Private Limited. And we are very excited, Powerhouse, to participate in IEEE 13 International Fair, which is organized in Karachi by IEEE, and we are participating as a platinum sponsor. We believe the IEEE platform is a great platform which benefits the industry, and it gives us a opportunity to interact with the B2B customers and some foreign delegates who are going to attend this great exhibition in Karachi. IEEE platform and fair are excellent fairs, and they are providing opportunity for all the commercial entity to participate and exhibit their products so that we can get the benefit, and we can also participate in many other exhibitions organized by IEEE. So I congratulate once again to IEEE for organizing such a great exhibition as they always do, and we see that this time again we will meet all our business colleagues and our customers and different people who are going to attend this exhibition. Thank you very much. Look forward to see you. ये हम करने जा रहे हैं एक्सट्रीम शूटिंग कंपटीशन। ये हैंगन का इवेंट होगा जिसके साथ जो है बास हैं ये उनके लिए है। तो हम नए शूटर्स हैं उन्हें तो हम करते रहते हैं। ये एक प्रोफेशनल इवेंट जो कि दुनिया में डिफरेंट मुल्कों में होता है। पाकिस्तान में ये करने जा रहे हैं, हमारी टीम बाहर के मुल्कों में इवेंट खेलने के लिए। तो कहा कि जो चीज़ें बाकी हैं लेट्स ब्रिंग पाकिस्तान अंडर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बैनर, और हम उस यहाँ पे फर्स्ट टाइम अरेंज करने जा रहे हैं। इसकी सबसे खास बात ये कि यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, चाहे वो नेवी है, आर है, रेंजर्स, ASF है, जो बाकी प्रोविंस की जित पुलिस है, कमांडो, इन सबको हमने किया है कि वो अपनी स्किल साथ जो अपने प्रोफेशनल शूटर्स हैं वो इस इवेंट में डालें, और अपनी काबिलियत को सामने रखते हुए मैं सबको ओपन चैलेंज किया है, और हमने कुछ खास इनामात रख, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफी हैं। उसके बाद जब हम ये अरेंज में जा रहे थे तो यूनिफॉर्म तो हम शूटिंग करते रहे, जो थे जो बेहतर शूट हैं उनकी तरफ रिक्वेस्ट आई कि हम भी ऐसा लेना चाहते हैं। तो हम सिविलियन कैटेगरी रखिए कि उसमें जितने भी सिविलियंस हैं जिनके लाइसेंस वेपन है ताकि अपने की जो स्किल्स हैं वो आजमाएं, और इसमें एक ओपन कंपटीशन में हिस्सा। फिर एक हमारे नेक्स्ट कैटेगरी है 50% हमारे 50+ हमारी वुमेन है, तो के लिए हमने स्पेशल कैटेगरी रखी है। इसमें जो भी पार्टी शूटर की वेपन हैंडलिंग बेहतर है या जिनको लाइसेंस वेपन है वो आके इसमें हिस्सा लें, और इसमें भी अपनी स्किल्स हैं उसको आजमाएं। तो ये हमने इनिशियली 6 सितंबर को डिफेंस डे पे रखा था, मगर क्योंकि चैलम का है और इसमें तमाम हमारे लोग मसरूफ हैं तो हमने 9 सितंबर पर लेके आए। तो 9 सितंबर में फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान शूटिंग कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें तमाम नेशनल और इंटरनेशनल शूट हिस्सा लेंगे, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि इससे एक पाकिस्तान का जो सॉफ्ट है वो बाहर आए, और जब हम दिखाएंगे जी पीसफुली लोग पे बेहतर तो इस चीज़ को कैसे करें। तो ये भी तरफ से और पुलिस की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उनकी सपोर्ट के साथ हम इसको कर रहे हैं, और इसमें जितने भी लोग को मैं इनवाइट करता हूँ कि इसमें के हिस्से और अपने स्किल्स में मैं शुक्रगुजार हूँ एक्सपो का, उनकी टीम कि वो इस ऑर्गेनाइज करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। इसको हम एक प्रोफेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि जो इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करें, और ये जब हम इसको प्रोटेक्ट करें तो एक बेहतर तौर पे हम पाकिस्तान के को आगे रख सकें। थैंक यू। ये बताइए कितनी होगा ये कंपटीशन, कितने इसमें शूटर जो है शिरकत करेंगे उनकी? ये कंपटीशन है सुबह 9 बजे शुरू होगा, शाम को 5 बजे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की,
और इसके अंदर जो लोग सिर्फ ये कि जो हिस्सा लेने आ रहे हैं, जो उनके साथ गेस्ट आएंगे, उनके लिए हमने एक ट्रेडिशनल तरीके से फूड स्ट्रीट टाइप का बंदोबस्त किया हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के चारों सूबों के खाने हम आप लोगों के लिए, जो आप दोस्त आएंगे उनके लिए, जो लोग हिस्सा ले रहे हैं और जो गेस्ट आएंगे उनके लिए हमने वो रखा है, ताकि एक ट्रेडिशनल तरीके से उनको हम वेलकम कर सकें और उनकी हॉस्पिटैलिटी कर सकें। तो ये एक मेहमान नवाजी होगी सिंध पुलिस की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों के जो इसमें हिस्सा लेंगे और जो देखने आएंगे। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर इमेज है जो कि हम पेश करेंगे दुनिया के आगे, न सिर्फ कंपटीशन हो रहा है बल्कि सिंध की रिवायत के हिसाब से हम उनको मेहमानों का खास तरीके से इंतजाम भी किया हुआ उनके खाने इसमें इस टाइम जो रजिस्ट्रेशन हो की है वो 60+ लोगों ने रजिस्टर किया है, तमाम पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, और ये वो हैं जो कि यूनिफॉर्म पर्सन है। उसके अलावा सिविलियन कैटेगरी मिला के टोटल जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है 140 लोगों ने इसको अपने आप किया है। प्राइस हमने उसमें रखा है कि 1 लाख फर्स्ट प्राइस है, सेकंड प्राइस 50,000 है, थर्ड 30,000 है। इसके अलावा हम मेडल्स देंगे और ट्रॉफी देंगे और सर्टिफिकेट्स देंगे। जो पिस्तौल की गोलियां हैं वो जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं उसको खुद खेल होता है, उसकी अपनी तरफ से होती हैं। उसके लिए पीओएफ वाह फैक्ट्री को रिक्वेस्ट की वो अपना स्टॉल लगाए, वहीं से वो बुलेट्स ले सकेंगे और वहीं से अपनी शूटिंग में ले सकेंगे। और प्रैक्टिस के लिए भी हमने 3 दिन पहले अपनी शूटिंग रेंज को ओपन किया है, ताकि वो आके अपने प्रैक्टिस करें, ताकि मैच डे पे उनको नया सरप्राइज न मिले। तो ये सब के लिए हमने एक ही जैसा स्टैंडर्ड रखा है, ताकि सब अपनी जो है काबिलियत को आजमा सके। इस टाइम जो पाकिस्तान में जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं जो कि काउंसलेट में काम कर रहे हैं, ये सब हमारे इंटरनेशनल मेहमान हैं। उनको हमने जब इन्विटेशन भेजी तो जो कॉन्सुलेट्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल हैं, वो कुछ आएंगे फॉर्म कैटेगरी में करेंगे, और जो सिविलियन है वो सिविलियन कैटेगरी। तो जितने भी कॉन्सुलेट्स हैं दे आर ऑल्सो इनवाइटेड और वो लोग इस हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा सर, ये इस बेस्ट इवेंट को करने का मकसद जो है वो जरा बताओ। मकसद है कि हमारे लड़के, आप ये मेरी शूटिंग टीम का, ये हमारी शूटिंग टीम के कैप्टन हैं, और इसके बाद इंस्पेक्टर शबीर जो कि अभी ड्यूटी सरंजाम दे कराची में। ये वो लोग हैं जो अपने शौक से इस स्किल को सीखा और इन्होंने वॉलंटियर करी जाके अपने इंटरनेशनल में हिस्सा लिया। वो जो लोग वहाँ पे देख के आए, सीख के आए हैं, हम उसी चीज़ को उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन के अंडर यहाँ पे इनका कर रहे हैं। नॉर्मली यार ये मैसेज पाकिस्तान का जो एक नेगेटिव मीडिया इमेज है, पता नहीं यहाँ पे क्या होता है और सेफ नहीं है, ये उनके लिए मैसेज है कि यहाँ पे सब चीज़ें न, जैसे बाहर के मुल्कों में इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं ऐसे हम भी करते हैं। और हम तमाम जितने भी फोर्सेज हैं उसके में ये कोऑर्डिनेशन और ये भाईबंदी को हम मेंटेन करने के, जब हर जगह से लाएंगे, एक दिन अपने एक साथ गुजारेंगे शूटिंग में, तो एक लाइफ टाइम मेमोरी होती है जो कि शूटर या वो जो टीम वापस लेके जाती है, और वो सेम की मेहमान नवाजी से मुस्तफीद होंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव इमेज है जो कि ना विद इन पाकिस्तान दे रहे हैं, एक इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी हम दें कि यहाँ पे चीज़ बेहतर है, नॉर्मल है, और हम भी कई चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जो कि हमें किसी और जगह पे हो। नो एज लिमिट, सिर्फ आपका लाइसेंस वेपन होना चाहिए और या फिर आपको यूनिफॉर्म पर्सन होना चाहिए, ये 2 कंडीशंस हैं हिस्सा लेने की। रिसेंटली हमने देखा कि जब स्ट्रीट क्राइम बढ़ा था तो आप लोग फोर्सेस भी बनाई गई थी, अब वायलेंस ज्यादा हो गया स्ट्रीट क्राइम में, तो अब क्या एसएसक्यू कुछ प्लान कर रहा है दोबारा से स्ट्रीट क्राइम में कोई एक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी रिसेंटली आपने 15 का जो एनकाउंटर था आपने विटनेस किया, वो लोग थे, वो एसएसयू ही ऑपरेट कर रहा है, आईसीयू की टीम वहाँ बैठी हुई है। ये स्ट्रीट क्राइम में हमारा एज अ फर्स्ट राउंडर जाते हैं, डिफरेंट तरीके से भी हमें रिक्वायरमेंट आती है कि कहीं पे अगर कोई सेंसिटिव एरिया है या ज़्यादा है तो हम उससे पेट्रोलिंग भी अपनी बढ़ाते हैं। मगर उसके अलावा जो 15 की जो सर्विस है दैट इज़ रन बाय द एसएसयू, उन्हीं के लोग से, और हम पब्लिक मदद उसमें कर पा रहे हैं। उनकी एक इंस्टेंट हेल्प की वजह से एक कॉन्फिडेंस है पब्लिक में कि अगर हम 15 पे कॉल करते हैं तो टाइम से पुलिस आ जाती है, और ये डिफरेंस, ये खौफ क्रिमिनल्स के लिए चीज़ को रोकने का बायस बना है। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे भी हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं उस कर रहे हैं, और आइंदा इसी तरीके से कर। स्केटिंग फोर्स बिल थी, स्केटिंग का मकसद ये था कि जो हमारे स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं वहाँ की, अभी जैसे स्टेडियम में वुमेन क्रिकेट टीम आई हुई है, अब जब हम पब्लिक के लिए खोलेंगे तो जो स्केटिंग के जो लोग होंगे वहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए होंगे। जो स्केटिंग फोर्स है था कि शहर के अंदर जहाँ पे गाड़ी जा सके या जो वो जगह है वहाँ पे करें, मगर यहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए उनको हमने लिमिट है।
वो 20 लोगों की टीम है, वो जहाँ रिक्वायर्ड होती है हम उसको दें, मगर मेनली उसको हमने स्पोर्टिंग इवेंट के लिए रखा है। अभी आप देखेंगे जब टीम है इनकी मैचेस होंगे, जब खवातीन है तो आप लेडी कमांडोज को स्केटिंग में देखेंगे, उनके लोगों की हेल्प करते हुए, उनके साथ गाइड करते हुए, और बाकी हमारे मेल कमांडोज भी देखेंगे। तो दैट इज स्पोर्टिंग इवेंट्स ओनली। और ये भी कहा गया था कि एसएसयू कमांडो जो है वो सड़कों पे रहेंगे, जो थाना पुलिस है वो गली मोहल्लों को देखेगी। कहीं पे भी एसएसयू कमांडो की गाड़ियां और जो पेट्रोलिंग वो दिखाई नहीं देती। इस तरीके से क्या बताया कि बनता है मुकाबला किया और हमने रैपिड रिस्पांस किया, तो बनता है कि अलग मोबाइल अलग से लिए, लेकिन जैसे कि अपने कमांडो है हॉटस्पॉट पे खड़े होते थे, एक दो जैसे दफे वो तस्वीरें भी शायद देखी, लेकिन उसके बाद कहीं लाइन हुई। जब पुलिस की तरफ से रिक्वायरमेंट आती है कि हमें यहाँ रिक्वायरमेंट है तो हम उसको डिप्लॉय करते हैं। उसके अलावा जो 15 की भी हम स्ट्रेंथन की है वो एसयू के कमांडो से की है, तभी ये पॉसिबल है कि 3 शिफ्टों में वो 24/7 काम कर रहे हैं और लोगों की मदद कर। तो जब भी हमें रिक्वायरमेंट आएगी तो हम इंशाल्लाह उसी तरह हॉटस्पॉट्स को भी कवर करेंगे, उसी तरीके से लोगों की मदद के लिए क्विक रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा, बजट वाले से इसमें कोई बजट नहीं है। जो आपकी फीस है हम उनका जो खर्चा वो निकालेंगे, प्लस स्पॉन्स का जो फूड अरेंजमेंट है वो है। फीस हमने 2000 रखी है फॉर यूनिफॉर्म पर्सन, 5000 फॉर सिविलियन पर्सन, और फीमेल कैटेगरी की भी 2000 फीस। अच्छा सर, ये पूरी दुनिया में जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो एसएचयू को फॉलो कर रहे हैं, और एसएचयू की जितने भी इवेंट है उनको आगे बढ़ाने के लिए वो, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक पाकिस्तान के बायस फख्र है कि हम मुल्क में एक ऐसा इदारा है जिसको हम एग्जाम्पलरी तौर पेश कर सकते हैं, जिस परफॉर्मेंस से खाली न सिर्फ ये कि उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं, बल्कि आगे लोगों के लिए भी हम एक उम्मीद की किरण है कि जब एसएसयू के जो बेहतर हो सकते हैं, बाकी पुलिस भी हो सकती है। तो एक बेहतरी की तरफ एक हमारा इकदाम है। इस टाइम अगर हम परसेंटेज में देखें तो हम 2% सिंध पुलिस है, तो 2% बेहतर हो गया है, 90% इंशाल्लाह बेहतर होना बनता है। इस तरीके से अगर लोगों की हम मदद कर सकें, उनकी तरफ सेंस ऑफ सिक्योरिटी सकें, तो जो पब्लिक का ट्रस्ट है पुलिस में वो बेहतर हो सकेगा। जी, ये हमारा चुकंडी में एसएसयू का हेडक्वार्टर है, वहाँ पे हम इसको अरेंज कर रहे हैं और वहीं पे हम सब कुछ शूटिंग सारा कुछ वहाँ पे हमने हो जाएगा इंशाल्लाह। टाइम लगेगा, सिस्टम ठीक होने जनरेशन लगती है, एक उसकी कदम है। शुरू में आप देखें कि मोटरवे पुलिस का जो इमेज था कितना बेहतर हुआ, पुलिस के लोग जाके वहाँ काम करते हैं, वो चीज़ें बेहतर होती हैं और पब्लिक भी मुतमईन होती है। इसी तरीके से एसएसयू की ये एक थोड़ी स्ट्रगल है, टाइम लगेगा इन चीज़ों को, मगर ये बेहतरी की तरफ जाने पे हम चल रहे हैं। वक्त आएगा कि सारे लोग इसी तरीके से पे काम कर सकें। हम ये कर सकते हैं कि जो मीडिया के दोस्त हैं जिनके लाइसेंस हैं उनका आपस में मुकाबला है, उनके हम स्पेशल टारगेट रखेंगे। आप अपने वेपन्स के साथ हैं, मेरी तरफ से फ्री ऑफ चार्ज आप अपने स्किल्स के वेपन्स के साथ हैं, वहीं पे अपने आपस में मुकाबला करें। उसकी हम कैटेगरी अलग से करें, उसमें आपसे रिक्वेस्ट जी। सर, और ये होने वाला है, बहुत जल्द बात हो जाएगा, तो आपने अर्सस पे काम किया, एक्चुअली होने जा रहा है, तो उसमें ना क्या आपके लिए फीलिंग? इस हवाले से ये भी समझ आ रही थी कि आपने कोई प्रपोज एनआरटीसी को दिया गया बजट और आप नहीं चाहते क्योंकि आप बहुत लो कॉस्ट लेकर आ रहे थे, लेकिन आईजी साहब ने एनआरटीसी को दिया, इसमें उसमें जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना तो बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं, ये आप सब लोगों को पता है, और उसमें हम कोशिश करें कि अपनी तरफ से बेस्ट करें, चाहे एक्स करे या वाई करे या जेड करे। हमने मेहनत का ये फायदा हो, हमने डॉलर्स में लॉक कर दी, हमने वो मार्जिन्स खत्म कर दिए जो लोगों की डिफरेंट इंटरेस्ट वजह से बढ़ रहे। तो प्राइस की कॉस्ट को हाफ करके हमने जो 200 मिलियन की कॉस्ट 300 मिलियन में कर दी। अब वो 100 मिलियन पे ही लॉक है, चाहे वो ए टीम करे बी टीम करे। उसका फायदा हुआ कि हमने डायरेक्शन सेट कर दी, हमने चीजें बता दी कि किस तरीके से, और हमने सैंपल के तौर पे पूरा एक सिस्टम बाहर लगा दिया, भी लगा हुआ है, इसको फॉलो करें तो हो जाए इंशाल्लाह। उसी गाइडलाइन पे करेंगे और इसमें जब भी होगा मुल्क के लिए बेहतर होगा, इस शहर के लिए बेहतर होगा, यहाँ के आवाम के लिए बेहतर होगा। तो इस चीज से इंशाल्लाह होपफुल है आगे भी चीजें होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मुगीस है और मैं बीटीएल मेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सेल्स स्पेशलिस्ट हूँ
और हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स में हमारे पास कंप्लीट रेंज है, जिसमें हमारे पास सेगमेंट में है एस्थेटिक इक्विपमेंट्स हैं, और हमारे पास जो रिहेबिलिटेशन है जिसको हम फिजियोथेरेपी भी बोलते हैं वो हमारे पास हैं। हमारे पास हमें जब ये एक्सपो के बारे में पता चला, हम लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, यहाँ के मैनेजमेंट ने हमसे रब्ता किया, हमने उनको अपने बारे में बताया, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम, क्योंकि हम आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे एक्सपो में सब लोग अपनी मशीन्स को लेके आए हैं। क्योंकि दुनिया न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर जा रही है, रोबोटिक्स के ऊपर जा रही है। सेम इसी तरह मेरे साथ यहाँ पे हमारे पास सुपर इंडक्टिव सिस्टम है जो कि एप्लीकेटर रोबोटिक है, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के अंदर ये हेल्प करती है, जो कि बोन्स ट्रीटमेंट्स को, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स को ये हेल्प आउट करती है फिजियोथेरेपी अंदर, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी पेशेंट के लिए। सुपर इंडक्टिव सिस्टम जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि दुनिया में शायद ही बहुत कम कंपनीज है जो कि इसके ऊपर, चाइनीज बहुत जो कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन जो यूरोपियन ब्रांड्स हैं, जो यूएसए ब्रांड्स हैं, वो अपने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारे पास इसी तरह कार्डियोलॉजी सेगमेंट में जो कि हार्ट से रिलेटेड मशीन्स हैं, ईसीजी मशीन, ईटीटी मशीन, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर, एक कंप्लीट रेंज है हमारे पास उसमें। सेम इसी तरह हमारे पास स्किन ट्रीटमेंट्स की मीन्स डिवाइसेस हैं जो हम लोग पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमारे पास यहाँ पे आपके सामने फिजिकली मशीन भी लगी हुई है, हमने डेमो पे लगाई हैं। हमारे साथ एक्सपो सेंटर वालों ने बड़ा ताउन किया। मैं खुद लाहौर बेस्ड हूँ और मैं आया हूँ यहाँ पे, और मुझे मैनेजमेंट अच्छी लगी है, यहाँ पे सपोर्टिव है, और बार बार आके उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी भी हैं, कोई मसले मसाइल वगैरह तो नहीं है। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट है कि आपको हेल्थ प्रोफेशनल्स भी मिल रहे हैं जो कि आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। मेन चीज़ ये होती है कि पेशेंट को फैसिलिटेट किया जाए, उसको हम लोग क्या करते हैं कि से चार्ज कर लेते हैं, डॉक्टर्स चार्ज करते थे, लेकिन उसको फैसिलिटी उस तरह उस लेवल की प्रोवाइड नहीं की जाती, जो कि यहाँ पे अवेयरनेस दी जाए लोगों को, डॉक्टर्स को बताया जा रहा है जो उस पे आ रहे हैं। इवन जेडीसी वाले भी आए हैं हमारे पास जो कि एक अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, फाउंडेशन है, तो हमने उनसे भी बात की है टेक्नोलॉजी के ऊपर, हमने डॉक्टर से भी बात किया है, तो इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है। और फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो हैं वो आनी चाहिए और हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ये मशीन्स होनी चाहिए। थैंक यू।
ladies and gentlemen, students, I shall read on the same and the defense export organization and ideas, mainly related on the effect and what the organization does by itself. And thereafter, I have a tutorial which will take you journey of the depot and activities of the ideas. It was raised in 2000 under Joint Staff Members, which was later in under Ministry of Defense Production in 2002. Since then, under the base was to promote and project Pakistan military's industrial progress and export potential. All core functions of the depot are performed on corporate model with no financial burden on national staff. This segment, which has been set for the depot, reads as a national platform, provides focused manufacturing, service sector, and export chain distribution, facilitation, and coordination for sustained growth of defense exports of Pakistan. To achieve this vision, the depot undertakes promotion, facilitation, and coordination of the opportunity networking of the defense industry. It organizes defense exhibitions both inland and abroad, including the flagship event of the IDRs, establishes Pakistan Pavilion across the globe. Even in this regard, depot establishes 12 to 14 Pakistan Pavilions annually across the globe in different countries for our own defense production enterprises. We also had the unique honor of organizing a single exhibition at AR, which was actually mentioned a little while ago. With regard to national exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of supplies and vendor defense exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Commerce Lahore, 2 editions of the exhibition at the Rawal Expo, Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Defense Port Turkey at Islamabad. The IDEAS has been a flagship event which is conducted biannually since 2000 and has grown over a period of time both in stature as well as in size. Other than these 4 subjects, the depot also maintains an international standard space center here at Islamabad. We have carried out an extensive mapping of the private defense industry wherein the potential buyers across the globe are now directly interfaced with public as well as the private defense manufacturers. A comprehensive defense products catalog has been prepared, which is not only available online but has also been provided to all our foreign missions and is presented to all visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during ITRs. Now, just briefly touch upon the centerpiece of the recent efforts of the depot, which is basically focused on advertising of the private defense industry and wherein the private sector is facilitated for international participation. It is happy to note that 8 private companies participated in World Defense Show KSA without the government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defense, national as well as international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors and the small-scale manufacturers, basically to link them with the larger manufacturers and our private and public large-scale defense production enterprises. Now coming over to the flagship unit of IDEAS. As you are aware, IDEAS is the flagship unit of international stature of Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of the global defense industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deeply embedded mutual beneficial relations. Then the main objectives which are actually desired to be accrued out of the IDEAS include provision of the business opportunity for the defense industry, both for the international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defense exports. Image building of the country. Promulgate Pakistan's point of view internationally. And reinforce diplomatic efforts in the realm of defense diplomacy.
Now, this gentleman, brief introduction, I shall now take you through a documentary which will show you both these whatsoever I have said about ideas and how they actually reach this where we are standing today. Thank you very much. जी मेरा नाम सैयद असद मशदी है और आई बिलोंग टू मिलिट्री व्हीकल्स पार्ट्स बिजनेस और बेसिकली ये जो IFO है इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दोज पीपल हो जो कि डिफेंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं। एक विंडो पे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स और मैं बड़ा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डेपू को जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है आफ्टर दिस लॉन्ग कोविड जो सारी दुनिया ने फेस किया है। और उसके बाद ये एक जब दुनिया में B2B मीटिंग पॉसिबल नहीं हो रही थी तो मेरे ख्याल है ये डेपू ने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि लोग अपने एंड यूजर्स तक यहाँ पे पाकिस्तान मीटिंग अरेंज कर सके, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सके और अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सके। सो मैंने देखा है कि यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो डिफेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने अपने डिस्प्ले भी किया है। एट द सेम टाइम बहुत सारे फॉरेन कंपनीज जो है उन्होंने भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है जो कि बहुत अच्छा एक इंकरेजिंग पॉइंट है पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी के लिए भी। और साथ साथ ये भी दिखाया जा सकता है दुनिया को कि यस वी आर रेडी, वी आर हेयर टू सर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री है एट द सेम टाइम ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करती है। सो ये जितना भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है विन विन सिचुएशन था फॉर बोथ साइड्स, फॉर द प्रोक्योरमेंट एजेंसीज और फॉर द जितने जो इसके सेल कर रहे थे या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे या अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करने आए थे। सो थैंक्स टू डेपू, थैंक यू वेरी मच। बचत एक्सपो में बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का स्टॉल इस वक्त तवज्जो का मरकज है क्योंकि M9 पे बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और इनकी ग्रीन सिटी जिस तरह से काम कर रहे हैं आप जरूर देखें। आप शानदार काम और जिस नर्ख में और बचत एक्सपो में जिस बचत के साथ अगर यहाँ पर आप आ रहे होंगे आपको अंदाजा हो गया होगा कि इतने कम पैसों के अंदर आपको अपना प्लॉट मिलना इतना आसान काम दिखाई नहीं देता। लेकिन ये बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का बहुत बड़ा काम है। इनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फाद एहसान भाई इस वक्त उम्रे की अदायगी के में फैसल एहसान भाई जो है वो इस वक्त नहीं है, लेकिन इस वक्त फाद भाई के साहबजादे और डायरेक्टर होते हैं बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रैयान बिन एहसान मेरे साथ इस वक्त गुफ्तगू के लिए मौजूद है। रैयान फाहद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रैयान। वालेकुम अस्सलाम, कैसे नसीम भाई, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रैयान। जबरदस्त किस्म का काम आपका, लेकिन इस बचत एक्सपो में कैसा फीडबैक रहा बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए? मेरे ख्याल से एक तो पहले ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जेडी सफरवा साहब को और हमारे गवर्नर साहब को। एक तो इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, उसके बाद जिस तरह का यहाँ की أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ऐ अल्लाह, इस दावत कमिल और ता क़यामत कायम होने वाली नमाज के अब तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में नुमाकाम, फजलत और बुलंद दर्जा अता फरमा और उन्हें उस मकाम महमूद पर फाइज फरमा जिसका तूने उनसे वादा फरमाया है, और हम दिन हमें शिफात नसीब फरमा जब तू वादे के खिलाफ नहीं फरमाता। मैं असल में इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से एक माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफरेंट सेलिब्रेशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो पूरी दुनिया के अंदर कोविड की वजह से इफेक्ट हुआ सेलिब्रेशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पे ग्रुप्स और इनकी इन्वॉल्व थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस को दोबारा से प्रमोट करें, और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे या उससे बेहतर लेवल पे जाए। मेरा ताल्लुक उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर्ड था डेपो के अंदर, और एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था फॉर आइडियाज़, एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैकेंड पे रख के काम करते थे, बट देन with the passage of time they have become too good for this event, and mashallah इतने से के अंदर they have improved a lot, and internationally now Badar Expo Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम असलम खान है, ब्यूरो चीफ BTV कराची। 11वीं रियाज के हवाले से आज ब्रीफिंग रही और हमें जिस तरह बताया गया कि तकरीबन 229 पार्टिसिपेंट होंगे, 100 से ज्यादा ममालिक हैं जो यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। पहली आइडिया से यहाँ तक पहुंचे कि इसमें 2 नए ममालिक भी आ रहे हैं, ऐसे ममालिक भी हमारे पास आ रहे हैं जिनके साथ हमारे जो बरादराना ताल्लुकात हैं, दिफाई ताल्लुकात हैं। और मैं आपको ये बताऊँ कि हमारा तैयार है JF थंडर 17, उसमें बहुत से ममालिक ने खरीदारी में दिलचस्पी किया। माजी में अगर हम बात करें कि हमारा अल-ज़रार टैंक बहुत से उसकी खरीदारी में दिलचस्पी रखते थे, और अब आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी जो उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मजमूई तौर पर आज ब्रीफिंग बहुत हौसला अफजाई है हमारे लिए। पाकिस्तान दिफाई मैदान में भी किसी भी तरह पीछे नहीं है। हम पहली नुमाइश की अगर बात करें वो इंतहाई शानदार रही, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दिफाई नुमाइश है ये भी मजीद जो कामयाबी के झंडे की मजीद कामयाब होगी, और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कि हर दिफाई नुमाइश में हमें ये मालूम होगा कि हम दिफाई मैदान में किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जो कौम है उसके लिए भी ये बाइस इत्मीनान है कि उसकी जो मुसल्लह अफवाज है वो पूरी तरह तैयार है। किसी भी दुश्मन की जारियत का मुकाबला करने के लिए जो है वो पूरी तरह तैयार और डटे हुए हैं। आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक एनुअल इवेंट है, हर 2 साल के बाद होता है। इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से 2020 में हम इसको नहीं कंडक्ट करा सके, जब 4 साल के बाद हो रहा, तो उसकी वजह से अब इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और हम इंशाल्लाह पूरी तरह तैयार हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट कराए उससे मज़ीद बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा होगा। हमारे पास काफ़ी हाई लेवल डेलीगेशंस की कनेक्शंस आ चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया के तमाम बड़े आज़मों से हमारे पास डिग्नेटरीज आ रहे हैं, और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर फोकस किया है, वो ये न सिर्फ हम अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इस लूप में लेके आएँ,
और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन उसको शोकेस कर सकें। इस पर भी इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी होती है, पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्क से आए हुए लोग हैं या हमारे लोकल लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्क से आने वाली कंपनीज हैं, OEMs हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। और इसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल कंपनीज हैं, एट टाइम्स उनके भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर के मुल्कों कंपनियों के साथ। डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन है। इस लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और बहुत हाई लेवल, जैसा कि मैंने आपको बताया, आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब एक दफ़ा पाकिस्तान में उसका इनेकाद किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और बहुत पॉजिटिव मैसेज जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लेके जाएंगे। उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बड़ा इवेंट करा सकता है। और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ वो सिक्योरिटी चैलेंजेस नहीं हैं जो हुआ करते, और इस तरीके की चीज़ होगी। और आजकल फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना, ये हमारी इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार हम नक़द करवा रहे हैं कि बेसिकली 2 सेगमेंट्स में होगा, जिसका सेगमेंट 1 टियर 1 जो है वो आइडियाज़ के पहले ही दिन उसका इनेकाद किया रहेगा, और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकेंड ईयर का जो नेक्स्ट डे पे कंडक्ट करा जाएगा, दैट वुड बी द सेकेंड आइडियाज़। उस अंदर जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, वो आके काम प्रेजेंट करें। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा 2 दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को और यंग ऑफिसर्स को इन्वाइट किया हुआ, सुनेंगे और डेफिनेट कुछ ना कुछ इनसे सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर शोर से, चाहे वो कराची की सड़कें हों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर, बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो एरिया है और जो एग्जीबिशन का एरिया है, सब ऊपर बहुत ज़ोर शोर काम हो रहा है। और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट कर लें। सिंध गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्नेज हमेशा हमें मिलती रही है, पास में भी मिली है। और इस दफ़ा आपने खुद देखा कि हमारी जो 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी, दे वर हेल्ड एट CM हाउस। CM वेरी काइंड ऑफ उन्होंने शेयर किया, और वहाँ पर तमाम सिंध गवर्नमेंट के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके मौजूद थे। उनको जिस तरीके से सी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली, उनका बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देखा कि जब सिंध गवर्नमेंट ने अपना साथ हमें दिया तो उससे चीज़ें बहुत आगे आसान हुई। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Arsalan Khan. I am VP Sales at Shivli. Shivli is Pakistan's only private manufacturer of thermal images. We have come to Ideas the 3rd time. We have been regular participant in the Ideas Expo. Ideas is a very good platform for Pakistani companies, private or national, to demonstrate what sort of capabilities we have in the defense industry, and we can what sort of capabilities we can export and assist the other armies of the world. I would also like to thank Badar Expo Solutions, because Badar Expo is basically organizing the whole event, and they're doing a very good job. We have launched 2 new products here, SCUA MP and SCUA Mini at Ideas, binoculars with the LRF. This is this is a SCUA MP mounted over here, which is a LRF based SCUA binocular that can be used daytime or night time to give the forces image with the exact and accurate range of the target. Thank you. आइडियाज़ 2022 जो कि वैसे एक एनुअल इवेंट है, हर 2 साल के बाद होता है, लेकिन इस दफ़ा कोविड-19 की वजह से 2020 में हम नहीं कंडक्ट करा सके, अब 4 साल के बाद। तो उसकी वजह से अब इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और हम इंशाल्लाह पूरी तरह से तैयार हैं।
और हम उम्मीद करते हैं कि 2018 में जिस तरह कंडक्ट कराया गया था उससे मज़ीद बेहतर होगा और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन आता है। हमारे पास काफ़ी लेवल डेलीगेशंस की कमेटीज आ चुकी हैं जो कि पूरी दुनिया के तमाम मज़मून से हमारे पास डिग्नेटरीज आ और एग्जिबिटर्स भी हमारे पास यूरोप, एशिया, हर तरह से बहुत बड़े लेवल के एग्जिबिटर्स इस एग्जीबिशन में आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस दफ़ा हमने बहुत ज़्यादा जिस चीज़ की फोकस किया है वो ये है कि न सिर्फ अपनी जो पब्लिक सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अपने जो प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी इसके लूप में लेके आएँ और उनको भी एक आउटलेट दें ताकि वो दुनिया के सामने अपना जो प्रोडक्शन है उसको शोकेस कर सकें। इस पर भी इस तरह की कोई बिजनेस एक्टिविटी होती है जहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए हैं, आपके लोकल इंडस्ट्री भी मौजूद है, तो इसमें एक बहुत बड़ा उनके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। न सिर्फ यहाँ के जो दूसरे मुल्कों से आए हुए लोग हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं कि वो जो दूसरे मुल्क से आने वाली कंपनीज हैं, OEMs हैं, उनके साथ इंटरेक्ट हैं, उनके साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही साथ जो हमारे लोकल कंपनीज हैं एट टाइम्स उनके भी जॉइंट वेंचर्स होते हैं बाहर के मुल्कों की कंपनियों के साथ, तो डेफिनेटली ये हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट करेगा और हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए भी एक अच्छा साइन लेवल का ये एक इवेंट है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और वो हाई लेवल जैसा कि मैंने आपको बताया आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ जब पाकिस्तान में इसका इनेका किया जाएगा तो इसका बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव मैसेज है। जो लोग यहाँ पर आएंगे वो लेके जाएंगे, उनको पता चलेगा कि पाकिस्तान भी इस लेवल का एक बहुत बड़ा इवेंट करा सकता है। और तमाम तर जो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अब हमारे साथ वो सिक्योर चैलेंजेस नहीं हैं जो हुआ करते थे और इस तरीके की चीज़ होगी। आजकल जो फ्लड के बाद के जो हालात हैं उसके बाद इस तरह का एक इवेंट कंडक्ट होना ये हमारे इकोनॉमी को भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके अंदर हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेमिनार मुनक्किद करवा रहे हैं जो कि बेसिकली 2 सेट में होगा, जिसका सेगमेंट 1 टियर 1 है वो आईआर के पहले ही दिन उसका इनाद किया जाएगा और उसके अंदर 4 स्पीकर्स होंगे जो कि एक्सपर्ट्स होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और इसी तरह जो सेकंड टियर का जो नेक्स्ट डे कंडक्ट करा जाएगा दैट इज द सेकंड डे ऑफ आइडिया, उसके अंदर हमारे लोकल स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने इस पे काम किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, वो अपना काम प्रेजेंट करेंगे। और ये इन प्रेजेंट करने वालों के अलावा दोनों दिन हमने अपने स्टूडेंट्स को यंग ऑफ को भी इनवाइट किया हुआ, उनको सुनेंगे और कुछ ना कुछ इनसे सीख जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे ज़ोर व शोर से, चाहे वो कराची की सड़कों, आइडियाज़ के जो वेन्यू है कराची एक्सपो सेंटर उसके बाहर की कोई जगह हो, कराची एक्सपो सेंटर के अंदर का जो आउटर एरिया है और जो एग्जीबिशन हॉल्स का एरिया है, सब के ऊपर बहुत ज़ोर शोर से काम हो रहा है और इंशाल्लाह हम अपने टाइमलाइन को मीट करते हुए स्टार्ट से पहले ही कंप्लीट कर लेंगे। सिंध गवर्नमेंट के बारे में मैं ये कहूँगा कि उनकी पैटर्न हमेशा हमें दी रही है, पास्ट में भी है और इस दफ़ा भी आपने खुद देखा कि हमारे 2 स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग्स थी, दे वर हेल्ड CM हाउस, CM साहब वेरी काइंड ऑफ उन्होंने उसको शेयर किया और वहाँ पर तमाम सिंध गवर्नमेंट जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं हेड्स मौजूद थे, उनको जिस तरीके से CM की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिली उनका बड़ा पॉजिटिव हमने इम्पैक्ट देख के जब सिंध ने अपना साथ दिया तो उससे चीज़ें बहुत हमारे लिए आसान हुई। जिस तरीके से जब हम आइडियाज़ की बात करते हैं तो आइडियाज़ जो है ये इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन कोई 50+ कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है और जब 50 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन होती है तो आप कुछ समझ सकते हैं कि शो का साइज़ और चीज़ें जो हैं वो किस लेवल पे चला जाता है, जहाँ पे हमारे पास सारे चीफ्स के काउंटर पार्ट्स आ रहे होते हैं, दुनिया से डेलीगेशंस की पार्टिसिपेशन हो रही होती है और ये पाकिस्तान का एक नाम जो है पूरी दुनिया के अंदर एक प्रोजेक्ट हो रहा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शो जो है इस दफ़ा दोबारा 15 to 18 नवंबर को इंशाल्लाह कराची एक्सपो सेंटर में होगा। आज इसकी हमारी सारी सॉफ्ट लॉन्च थी जिसको ख्वाजा आसिफ साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। तो हमारा असल इसके अंदर मकसद है कि इसके अंदर हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन बढ़ाएं और इसके अंदर हमारी जितनी डिफेंस इंडस्ट्री है
वो सारी की सारी यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करती है। और इसके साथ साथ मेरा हमेशा से एक ये ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ है इसको हम एक तो प्रमोट करें और दुनिया को हम ये दिखाएं, जिसके से इस वक्त भी एक पॉलिसी है कि हम सेल्फ इंडिजनाइजेशन के ऊपर जाएं और हम अपनी खुद से पाकिस्तान जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चर करे यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमने इस पूरे इवेंट के ऊपर जिस तरीके से हम अपने लोकल एग्जिबिटर्स को जो है या मैन्युफैक्चरर्स को जो है वो हम सब्सिडी देते, तो उसमें उनका मकसद ही यही है कि हम उनको इस फोरम पे लाएं और लाने के बाद जो हमारे पास दुनिया से डेलीगेशंस आते, पार्टिसिपेशन आती है, ताकि ये उनको ऑर्डर्स मिल सकें और वो एक बिजनेस जनरेट कर सकें और इसके साथ साथ हमारी इस इंडस्ट्री के अंदर नई एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जितने भी हमारे जितने ये डिफेंस इदारे हैं, जितने हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका एक बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट है और ये एक भारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बदर एक्सपो इसको मेरी पूरी टीम, मतलब ये मिल के एक बंदे का काम नहीं है, इसमें सारी टीम एफर्ट्स होती हैं और ये पूरी टीम जो है वो मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम की है। और इसमें जितना कोऑर्डिनेशन और जिस टाइप की चीज़ें होती हैं आप उसको समझ सकते हैं वो कितना पीक टाइम होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह इसको पूरा टीम उसी के अकॉर्डिंगली जहाँ जैसी जो रिक्वायरमेंट्स उसको मैनेज करती है। तो बस अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया ये नहीं कि जहाँ पे लोग कंपनी के ऊपर और बदर एक्सपो के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एक और बड़ी खुशाइन बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह के 75 ईयर्स हमारे कंट्री को जो है वो कंप्लीट हो गए और आप जैसे देखते हैं कि ये साल आइडियाज़ का जो है वो भी इंशाल्लाह ताला उसकी पूरी एक सेलिब्रेशन इंशाल्लाह की जाएंगी आइडिया अंदर। और हम इंशाल्लाह जिस तरीके से आज आप सॉफ्ट लॉन्च में भी देख कि हमने एक स्टैम्प बनाई है जिसके ऊपर 75 ईयर्स को हमने उसके अंदर प्रोजेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान फोर्सेस का इवेंट है। इंशाल्लाह ये उसी तरीके से ये सक्सेसफुल इंशाल्लाह इवेंट होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असद कमाल है, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस। जीआईडी पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड कंग्लोमरेट है, कंपनी है। हम आइडियाज़ का 2007 से पार्ट हैं और मैं ज़ाती तौर पे तो सन 2000 से आइडियाज़ को देख रहा हूँ। जब इसके शुरू में 3 हॉल हुआ करते थे, आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट एग्जिबिटर्स व्हेन आइडिया स्टार्टेड। जी आई हैव हैड द ऑनर के मैंने इसको देखा है ग्रो करते हुए। 2022 है, अब माशाल्लाह 9 हॉल्स हैं इसके। तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मोमेंटस ओकेजन है 2022 में कि बहुत सारे मैं देख रहा हूँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था और आज बहुत सारे इंटरनेशनल विजिटर्स हैं और एग्जिबिटर्स हैं जो इस इवेंट का पार्ट बन चुके हैं। अभी अपनी स्टैंड पे मेरा ख्याल है 50 से ज़्यादा डेलीगेशंस को मैंने कंप्लीट की हैं, वैसे भी ज़्यादा आई एम श्योर इन्वाइटेड होंगी। और जो एग्जिबिटिंग कंपनीज हैं, 9 हॉल्स अगर हैं तो दैट मीन्स कि एग्जिबिटिंग कंपनीज जो पाकिस्तान में हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लोकल और फॉरेन। बहुत सारे और मुल्कों का इंटरेस्ट भी है इसमें। मैं देखता हूँ जी कि जो डिफेंस एग्जीबिशंस होते हैं फॉर अ कंट्री पाकिस्तान, एक बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म आपको देते हैं जहाँ पे आप डिफेंस कैपेबिलिटीज हर 2 साल बाद दुनिया के आगे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस है क्या, और आपको एक मौका मिलता है दुनिया से नेटवर्किंग करने का, बाहर की दुनिया को मौका मिलता है कि वो आसान ग्रेजुएट कर सके। डेपो एंड बदर एक्सपो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स, और मैं होप करता हूँ कि अंडर देयर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट they can take this platform and vision to new heights. So good luck to both of them. Thank you very much. Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीना आमिर है और मेरी एक ब्रांड है, मेरा का नाम है अनलकी वन और मैं ऑनलाइन स्टोर चलाती हूँ और इसमें आपको मेरे ऑनलाइन स्टोर पर भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और अभी का मैंने फ़िलहाल यहाँ पर बच्चा का मेरा स्टॉल लगाया हुआ है, वो उसमें आप यहाँ मेरे ना डिस्काउंट प्राइस में हर चीज़ अवेलेबल है, आप चाहें हर चीज़ मेरे पास अवेलेबल। It's 5 p.m.
मैं समझता हूँ कि ये जो आइडियाज़ है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत एक अच्छा मौका है, जहाँ पर पाकिस्तान के न सिर्फ अपने गवर्नमेंट के दिफाई सेक्टर के लोग बल्कि प्राइवेट सेक्टर के लोग भी अपनी चीज़ें 85 मुल्कों के लोगों को शोकेस कर सकते हैं, और जहाँ पर बहुत से दूसरे ममालिक के लोग इधर आते हैं तो आपस में मिलकर डिफेंस के मौजूद डिफेंस प्रोडक्शन पर काम करने की हमारी जो पूरी सलाहियत है उस बहुत इजाफा होता है। तो अल्लाह का बड़ा करम है कि गुजरने के बाद आइडिया हो रहा है और बड़े धूमधाम से हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत खुशाइन चीज़ साबित होगी इंशाल्लाह। मैं असल में इस इवेंट के साथ 2012 से एसोसिएटेड हूँ। 12 और 14 का इवेंट के अंदर मेरी अपनी काफ़ी पार्टिसिपेशन थी। उसके बाद से ये माशाल्लाह इवेंट हैज़ गॉन अप एंड नाउ इज़ वन ऑफ द बेस्ट इवेंट्स दुनिया के अंदर फॉर डिफेंस एग्जीबिशंस। जो लास्ट टाइम नहीं हो सका वो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर कोविड के से इफेक्ट हुआ एग्जीबिशंस के अंदर, बिकॉज जहाँ पर भी गुड्स और इनकी इन्वॉल्व थी वो ख़त्म हो गई। बट पाकिस्तान के लिए अगेन बैक वी आर इन द लाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जिसके ऊपर हमें अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा से प्रमोट करना है, और इस इवेंट के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत और करना पड़ेगी ताकि हम दोबारा उसी लेवल पे बेहतर पे जा सकें। मैं उस वक्त डेपो से था, मैं डायरेक्टर कॉर था डेपो के अंदर, और बदर एक्सपो सॉल्यूशंस हमारे वक्त में पहली मरतबा इंडक्ट हुआ था आइडियाज़, एंड पहली मरतबा जब ये आए थे तो उतना एक्सपीरियंस उनका आइडियाज़ का नहीं था, बैक एंड पर रख के काम करते, बट देन with the passage of time they have become too good for this event. Mashallah, इतने अरसे के अंदर they have proved a lot, and internationally now Badar Expo Solution is recognized as one of the best event managers in Pakistan. बहुत अच्छा काम है। Fed Minister, Defence Production, Federal and Provincial Ministers, Chief Minister Singh, Chairman, Joint Chief of Staff, Services Chief, Director General, Defence Export Promotion Organization, Senior Civil Military Delegates, Chairman and Chief Executive of the National International Defence Organizations, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good morning. It is my pleasure to speak at the 11th edition of the National Defence Exhibition and Seminar, commonly known as Ideas 2022. I am very pleased to see the presence of a large number of guests, including honorable delegates, exhibitors, and visitors who traveled from around the world to join us today. I welcome you all to this special edition of Innovation and Excellence. Indeed, your presence here today truly strengthens our resolve to foster and promote strategic relations with our partners and friends while encouraging technological growth and knowledge sharing. Distinguished guests, since our government formed, unity government formed in April this year, the coalition government has been engaged in efforts to bring the country out of various challenges. The most serious among these crises that has expended most of our time and energy is the stabilization of our economy. We inherited an economic catastrophe where Pakistan was on the precipice of a default, and took, alhamdulillah, by the grace of God and the efforts of the unity government, the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis we have yet to witness in our history. The most unfortunate aspect of this economic crisis was, in addition to the economic impacts of the COVID pandemic that affect each and every nation across the world and cause economic difficulties for citizens everywhere. In addition, the economic impact of the conflict, the Russia-Ukraine conflict, the risk of economic default in Pakistan was not only exacerbated by these factors, but a direct result of conscious decision-making. This is effectively a collective shooting itself in the foot. And it is something that we should all agree should never happen in the course of our governments coming over, political parties change, but we never compromise the fundamentals of our national economic policy.
At this time, we've been focused on making service delivery efficient and people-centered, fixing Pakistan's energy woes, rebuilding Pakistan's foreign relations, and giving a sense of stability in our policy, if not political environment. As far as foreign policy is concerned, I'm happy to report, as a result of our teamwork, extensive positive engagement across the board, Pakistan's diplomatic relations, diplomatic ties have gone from strength to strength. Over the past 6 months, we've witnessed a positive trajectory of our diplomatic relations, be it with the East, the Middle East, the West, the rest of the world, culminating in our visit from the FTF list, the Financial Action Task Force, and on our way, hopefully, restoration of our GSP Plus status. Just when this looming economic crisis was averted and things started to move in a positive direction, we experienced the worst ever climate catastrophe that Pakistan has ever seen. The monster monsoon on steroids, as Secretary General Antonio Guterres put it, resulted in 1/3 of the landmass of our country being underwater. 1 in 7 people affected, that's 33 million people of Pakistan, 16 million of which are children, 600,000 women waiting to give birth. The impacts of this on the backbone of our economy, the agriculture sector, have been devastating. The total loss and damage is estimated at more than $32 billion, which is 10% of Pakistan's GDP. This climate event will directly correlate with a significant portion of our population being thrust below the poverty line. Given the massive scale of destruction, we have been pushed back for decades, but in every crisis, there is an opportunity. And we convert this crisis to an opportunity if Pakistan commits to not only investing in these less developed areas, in these rural areas that have been devastated by the flooding, but also as we look towards reconstruction, rehabilitation, we hope to do so in a climate resilient manner. We too share the aspiration to not only build back, but build back better. In our interactions with world leaders, including the recently concluded COP27, we underline the need for concentrated global action to take climate change as a priority. As the chair of the G77 plus China, we have led the demands of the Global South climate finance and climate justice to enable developed countries to cope with climate adaptation and mitigation challenges. But in addition to that, we have, alhamdulillah, been successful, and this is a success not only of the developing world that has long held this demand, but of Pakistan and the people of Pakistan, that following the devastation from this climate catastrophe, in our capacity as G77, we have successfully negotiated to add on to the COP27 agenda, in addition to mitigation and adaptation, concept of loss and damage. It was only after we, Pakistan, experienced the devastation of these floods that have resulted in a 10% loss to our GDP, that it became evident to us that there was no international financing mechanism for devastation, for loss and damage of this scale. And it was after our own experience that we joined the many countries that have long been demanding that loss and damage be added to the COP and global agenda. And we hope, if it was too late for the people of Pakistan to benefit the lack of such an institution, that the next country, the next developing country to be affected, will be able to benefit from an internationally agreed upon mechanism for financing loss and damage. There should be no doubt in anyone's mind about the potential of climate change to reverse all endeavors for sustainable development goals. Climate change is one of the most national security threats that can ignite and deepen conflicts.
And as we have witnessed, Pakistan is now ground zero for climate-induced disasters and must prepare for the challenges associated. Ladies and gentlemen, today the increasingly complex security environment poses multifaceted threat to national security and stability of the countries. With rapid advancement of technologies and proliferation of related knowledge, we are experiencing visible change in the established security paradigm. In today's globalized world, the national security has emerged as a dynamic concept that is as much economic, political, social, and institutional as it is military and strategic in nature. In an age of fake news and disinformation, the threats to national security have increased manifold. The specter of rising global food and energy prices is putting immense strain on national cohesion and unity, thus deepening internal fault lines. It is our considered opinion that the best way to safeguard and strengthen national security is to achieve economic self-reliance, rebuild and strengthen political institutions, deliver the 21st century governance that is demanded and required, ensure rule of law, and put the people at the center of public policy. This requires a much needed reset in our thinking, as well as the way we conduct business with the state. Internal consolidation can alone enable our nation to secure its core economic, foreign policy, and security interests. And in order to do so, each institutional must function within not only their constitutional domain, but with a primary focus on their objective, on their national goal. For example, I am a politician, I am a parliamentarian, and I represent my constituency in Parliament. My job is to be answerable to Parliament, to be present in Parliament, and rather than lash out with my political opponents on the streets or in the public arena, we have created this forum where all people of Pakistan can be represented, where our exchange of ideas, our debate should lead to the addressing of issues of national importance through consensus, so we can move beyond our existing state of flux and focus on the priorities of our nation. Distinguished audiences, the new technologies led by this revolution in the field of artificial intelligence are playing a vital role in confronting various security challenges. In my view, the responsible use of technology advancement can make the world a better and safer place. Pakistan, being a responsible state, is always committed to play its role for international peace, stability, and order. Reciprocity, mutual interests, and international norms, the guiding principle that govern Pakistan's relations at the bilateral and multilateral level. In the regional context, the transformation of South Asian geostrategic environment has further accentuated the importance of this region in world affairs. Resultantly, regional cooperation and active engagement of regional and global players has become imperative, particularly to achieve regional peace, security, and social economic development. On the other hand, stability and turmoil that has beset our region for many decades also needs a firm and coordinated response by all stakeholders. We believe in meaningful dialogue on the basis of equality, not only to resolve bilateral issues, but also to unpack the immense economic potential of our region. It is here that the peaceful resolution of the long-standing occupied Jammu and Kashmir issue is in light of when resolutions and actions of the communities is central to establishment of sustainable in South Asia. Distinguished guests, it is heartening to note that Pakistan's defense industry has now achieved a good level of quality and reliability, wherein its products are comfortably competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, yet the volume of exports, in my opinion, is not commensurate to our actual and true potential. A crucial factor in this context has been the limited involvement of the private sector in defense production and export activities. In addition, relatively less attention has been paid to academia industry interface and in the involvement of R&D organizations which curtailed the competitiveness of certain sectors of this industry. In order to achieve this
objective will stress upon the integration of private defense industry to achieve maximum results. New ideas and the entrepreneurial and management skills of the private sector need to be co-opted with public sector defense industry. The potential of academia and R&D organizations needs to be incorporated with the defense industry for more efficiency as well as volume to our defense production exports. Our government, ladies and gentlemen, continue to promote a business-friendly environment for investment in human capital and professional development in the demand-driven industry. Community government is also committed to deliver an industrial strategy that contributes to growth and employment and encourages small and medium enterprises to come forward and join hands for the development of our defense industry. In this regard, I look forward to the Ministry of Defense Production's formulation of a clear policy framework to integrate the whole potential of Pakistan's defense industry. Distinguished guests, when we talk about defense industry, International Defense Exhibition and Seminar is an iconic platform for showcasing the latest defense technologies and innovations. In fact, Ideas is a regional gateway for international manufacturers and suppliers to explore new avenues of defense cooperation through joint ventures, outsourcing, and collaborations. On the other hand, the presence of a large number of foreign exhibitors and delegates reflects Pakistan's deeply embedded and mutually beneficial relations with the international fraternity. I would say that Ideas is a shared vision for global peace, stability, and harmony amongst the community of nations. And the Ideas slogan, Arms for Peace, truly reflects Pakistan's principal stance in this regard. Ladies and gentlemen, before I wind up, allow me to appreciate the efforts of the Ministry of Defense Production, Defense Export Promotion Organization for successfully holding a series of ideas to the best of Pakistan's defense sector and promoting international cooperation in the field of defense production. I applaud the continuous support of the federal and provincial ministers, the Pakistan Armed Forces, law enforcement agencies, and the government of Sindh for the successful conduct of this mega event. I'm also very pleased to know that the Pakistan Postal Services has issued a commemorative postage stamp to complement the holding of this very special edition of Ideas 2022, 75th year of the independence of Pakistan, and I am positive that this landmark event will achieve more progress in the years to come. I thank you all. Pakistan, Zindabad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. Professor Dr. Syed Irfan Haidar, the chair, distinguished panel members, General RF, DG Defense Export Promotion Organization, worthy delegates from the friendly countries, general officers, dignitaries, honorable ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's a great privilege for me to be standing here and thanking the distinguished panel for educating us on a subject which is still evolving but very important for us. I followed the discussion with a lot of interest, and I wanted to make some comments which I will now be sharing with you. One of the points that we discussed was intelligence. I believe intelligence is the ability to assimilate the information in one situation and then analyze it in a manner that it can be applied in a totally different situation, and also to be able to sift the information from the noise and to be able to make corrections if something goes wrong. So all that combination which is there in the intelligence, which distinguishes us from the animals, we are trying to put it through algorithms into the IT system. So far, the Turing test appears far away. So I think we are not yet in danger of being eliminated by the computers or robots. But at the same time, we have to be very cautious, as Dr. Irfan said in view of any technology. It can't be punished for everything. And also, we have to understand that AI's use will vary from situation to situation. Take the example of chess. Now, chess has very defined rules, and chess has two opponents contesting with each other over board of 64 pieces, 32 pieces or 64 squares. This is something which AI can understand. It can comprehend, because no matter who the two opposing sides are, they have to follow a set of rules, and then they have to apply it on a very, very limited scale. So
AI can master chess better than human beings, maybe. The other example that came here was that of the stock exchange. Now, stock exchange is a very limited field where there is no opponent. It's just a lot of data collection and associating it with the happenings around the globe, how it's going to impact it. In normal circumstances, a flood in China would not be linked with stocks in New York Stock Exchange. But with the help of AI and giving it a data of years and years, the AI will be able to correlate something which human minds will need a lot of exercise to understand. For a normal mind, it will need, okay, the flood has come in a certain area. How does it affect production? How does it affect the transportation? Does it affect the tanker movement? Does it affect the petrol supply? Does it affect the container movement? With AI being able to utilize a data of years and linking it with everyday stock exchange ups and downs, can reach that level where any happening around the globe and impact on the stock can be worked out. Now, taking these two examples on the side, look at what is actually warfare and what is defense. War is a contest of opposing wills, but there are no rules. It's not on a chessboard, it's played live. And in this case, the things that are to be discussed or achieved are not a figurative calculation of stock values, but so much of diversification that it will be very difficult for any AI module, any AI system to overrule what a human being can do. Those of us who have been practitioners of warfare, the decisions by a captain with 5 years of service, 6 years of service, and the decision by a general with 35 years of service, they can't be the same because of the background of 30 years difference and learning that he has done over a period of time. Whether right or wrong is something different, but the decisions cannot be the same. So similarly, giving AI a data, one, that data is not available right now, the warfare data. Every war has different dynamics, every war has different kinds of weapons, every war has different kinds of adversaries. Every war has different thought processes on both sides. The man of 1945, Second World War, his way of thinking, and the man of 2022, these are two different things. So war cannot be totally predicted by the AI or cannot be controlled by the AI. Because essentially war is what? It is contest of the opposing wills. In warfare, the main target from day one, from the very beginning of the warfare, has been the will of your opponent. You want to subdue the will of your opponent, and over the years, human beings found weapons and violence to be the key to subjugating the will of the opponent. And they use that to their advantage, and that is what brought us into the domain of wars. Where I see more scope for AI is some part which was discussed here. It is shaping the minds of your opponents and making them capitulate without firing a bullet. By using AI to play with the way they think, the way the society operates, making that society fight with each other instead of fighting outside, making that society collapse internally through economic, through political, through religious, ethnic, or any other kind of warfare internally. So I think that particular aspect of AI is already in play, and we are not yet fully aware of it. But this is being played by the global players at various levels. And if we look at it, we are also being subjected to it. Recently, there was a discovery that Indians were operating fake sites and generating fake news to malign Pakistan. Well, this should not come as a surprise. This is what is going to happen. And how much of this is already happening is again something which should interest the practitioners of warfare. The other aspect where I think what I gathered from the discussion today, AI can help you regulate so many of the mundane tasks which today sap the energy of decision maker, like the logistic calculations, the movement of supplies, like time taken for move from one place to another. So, and so many mundane plans, those can be comprised and automated with the help of AI with a fair degree of certainty. And of course, keeping some breaks in between for the variables which you don't understand. But end of the day, the major decisions you make will remain human.
and AI will only be used as a decision support mechanism, because it will be able to analyze many of those informations which human beings cannot process at time. So it can act as a decision support mechanism, but it cannot replace the decision makers right now as we are. Still, it is an evolving field, and like all predictions in the past, it will not be a good thing to predict something which may change very suddenly, and we may find that sometime in near future, artificial intelligence has reached that level where human beings are not required to control. But one thing I'm certain, that artificial intelligence can never compensate for the natural stupidity of human beings. And that is what we need to care for. And as practitioners of war, we need to guard against our natural stupidities. Thank you very much, gentlemen. I once again thank all of you for all the inputs that you give. You have given us a lot of food for thought, and I'm sure all the people attending here have benefited from this talk. Thank you very much. Honorable Defense Minister, Major Manasir, Excellencies, Assalamu alaikum, good afternoon. It is a matter of honor for me to extend a very warm welcome to the Defense Minister, Federal State Ministers, Chiefs, Ambassadors, High Commissioners, legacy of senior serving and retired officers from our forces, our guests from National Business Group and Government Departments. We are grateful to the Honorable Defense Minister for placing the formally National Defense Exhibition Seminar 2020, better known as acronym IDEAS. Ladies and gentlemen, we entered the National Defense Exhibition industry by organizing the first IDEA in the year 2000 at Expo Center Karachi, 125 international exhibitors and 150 foreign delegates. During the last 2 decades, IDEA has grown steadily in space, volume, exhibitor and foreign delegates. In IDEAS 2018, we had a record participation of 524 exhibitors and 231 delegates representing 44 countries. And we are lucky that Ahmed is here, who was the DG then, and we had a record participation across the world. The opportunity to accelerate IDEA got adversely affected when IDEA 2020 has to be rescheduled due to the COVID, which was one of the worst of the living. World in general, and Pakistan in particular, fought with courage and determination. COVID is still not over, but we have learned how to live with it. Ladies and gentlemen, I'm glad to share that the 11th edition of IDEA is scheduled from 15th to 18th November 2022, the year of 75th celebration of independence of Pakistan. What a proud moment. Despite our 4 years, we have received a booking for more than 70% of the available space today. Needless to say that IDEA 2022 will be much bigger in size and stature than ever before, inshallah. We are also in the process of extending invitation to the defense delegation of around 85 countries and expect to receive positive from the honorable invitees. IDEA established itself as an attractive and conduit to promote mutual understanding, trust, friendship and cooperation. In this regard, Pakistan's defense industry and vendor industry offer a great opportunity to the defense industry of the developed world. Ladies and gentlemen, it and Pakistan's large defense industry to the outside world by showcasing Pakistan's defense production capability in the conventional realm. Aimed at exploring ways means of partnership in defense production through joint ventures, outsourcing and cooperation. Ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to share the vision of IDEA, which is twofold. On one hand, it aims at increasing space for joint cooperation between Pakistan public and private enterprise with the regional and global partners, while on the other hand, it aims to enhance the possibilities of public-private partnership, providing a unique opportunity to our friendly countries to build Pakistan, sit together, interact with each other, cooperate to build defense ties, and find solutions to the problem confronting the region and the world. I will make a special mention of Ministry of Commerce as well as the Trade Development Authority of Pakistan for their all-out support and availability of Expo Center Karachi as a venue for the IDEAS 2022. I would also like to thank the Ministry of Communication and Director of Pakistan Post for according approval for issuance of commemorative postage stamp on 14th of August 2022, signifying the holding of 11th edition of IDEA in 75th year celebration
independence of Pakistan. May I also mention that the government of State and Karachi District Administration have always been forthcoming and very supportive of holding mega event in Karachi. I would also like to thank the solution for event organizer for his untiring efforts and courage. Ladies and gentlemen, in the end, I would like to thank all the worthy guests for accepting the invitation to attend this ceremony. Honorable Defence Minister, we are personally grateful for your presence on this occasion. I thank you all. Ladies and gentlemen, in the next few minutes, I shall briefly touch upon the salience and the new defense support organization and the ideas made directly on the effects and what the organization does by its. And thereafter, we will have a tutorial which will take you to the journey of their own activities of it. It was raised in 2000 under joint staff headquarters. It was raised under production in 2000. Since then, airport under MOD. The base aim was to project Pakistan's industrial commerce and defense export potential. All functions of the level are performed at the corporate model with no burden on national exchequer. The ministry has been spent for the level as a national platform for export to defense manufacturing, service,
and exposed to promotion, facilitation, and funding for sustained growth of defense exports of Pakistan. To achieve this vision, the government undertakes promotion and coordination of business opportunities and networking for the defense industry. It organizes defense exhibitions both inland and abroad, including the flagship event of the IDRs, stretches Pakistan across the globe. In this regard, it establishes 12 to 14 Pakistan affiliates annually across the globe in different countries for our own defense production enterprises. We had the unique honor of organizing a single country exhibition at Iraq, which was actually a little while ago. With regard to national exhibitions, the depot has been instrumental in organizing 2 editions of the Supplies and Vendors Defense Exhibition at Lahore in concert with the Chamber of Lahore, 2 editions of the Defense Exhibition at the Rawal Expo Rawalpindi in concert with the Rawalpindi Chamber of Commerce and the Export Turkey at Islamabad. The IDRs has been a flagship event which is conducted by since 2000 and it has grown over a period of time both in scale as well as size. Other than these 4 subjects, the depot also maintains an international display center here at Islamabad. We carried out an extensive mapping of the private defense industry where are the potential buyers across the globe are directly interfaced with public as well as the private defense manufacturers. A comprehensive defense product catalog has been prepared, which is not only available online but has also been provided for our foreign missions and is presented to all the visiting dignitaries. In addition, the depot also conducts seminars other than the main seminar during IDRs. Now, just briefly touch upon the centerpiece of the recent effort of the depot, which is basically focused on magnetizing of the private defense industry, and then the private sector is facilitated for international participation. It is heartening to note that 8 private companies participated in World Defense Show KSA without government support. However, this participation can increase manifold with the government support in the future. We are also focused on integrating and participating along with the Chamber of Commerce in our different defense national and international exhibitions. Besides, we are focused on the suppliers, vendors and small-scale manufacturers, basically to link them with the large-scale manufacturers and our private and public large-scale defense production enterprises. Now coming over to the flagship event of IDRs. As you are aware, IDRs is the flagship event of international stature for Pakistan, which is a sought-after rendezvous for business and knowledge sharing. With synergistic interaction of global defense industry, it serves as a shared platform both for global peace and stability. International recognition and participation thus truly reflects deep embedded mutual beneficial relations. The main objectives which are actually designed to be accrued out of the IDRs include promote the business opportunity for the defense industry, both for the global international exhibitors as well as the domestic exhibitors. Attract maximum numbers of the domestic as well as the international exhibitors. Demonstrate organizational skills and increase in the defense sectors. Image building of the country. Create Pakistan's point of view internationally. And reinforce diplomatic efforts in the realm of defense diplomacy. Now with this gentlemen, with the brief introduction, I shall now take you to a documentary which will actually show you both these whatever I have spelled out, ideas and depot. How did it actually reach to this time today? Thank you very much. It is indeed a matter of great pleasure to see the International Defence Exhibition and Seminar, more popularly known as IDRs, gaining strength with every passing year. The exhibition has grown in scope and stature in a span of 22 years, and I feel satisfied to see Pakistan's achievements in a relatively new ground for us. Over the years,
IES has become a great meeting place for defense experts, high-level defense delegation, analysts, and trade visitors from all over the world. This rendezvous of ideas provides excellent opportunity to develop better understanding and friendship, networking of the defense industry for trade and joint ventures, and more importantly, seeking affordable solutions to meet the challenges being faced by the defense industry. I should say I am really proud of the progress IDEA has made, and which is evident by an overwhelming participation of traders, exhibitors, delegates, and visitors in last 5 years having year 2018. Honorable guests, Pakistan harbors no aggressive designs against any state, but we are determined to defend our territorial integrity and safeguard our sovereignty. Armed forces of Pakistan are battle-hardened and known for their professionalism the world over. Our contribution towards the UN peacekeeping missions and our performance around the globe is a clear manifestation of devotion to duty and professional skills. The motto of this exhibition, Arms for Peace, also highlights our commitment to the international community for peace and harmony. Pakistan will, inshallah, continue to develop our military potential that guarantees peace with honor and dignity. Towards this end, we have been able to develop significant capabilities for indigenous production of sophisticated weapons and equipment. It is a matter of great satisfaction that besides meeting the domestic requirement, our defense products are now gaining market shares at the international level as well. Praiseworthy progress has been made in production of complex systems like main battle tanks, UAVs, armored vehicles, air-launched munitions, fast-attack missile crafts, maritime battle vessels, fleet tankers, modern jet aircraft, aircraft-related technology. I see a great potential in our defense industry to export its products on competitive basis through responsible arms trade. Honorable guests, holding of IDEA is a reflection of Pakistan's consistent efforts to galvanize the industrial activities for production of defense equipment through collaboration and joint ventures, in addition to indigenous production. Having overcome the effects of unprecedented and devastating COVID-19 pandemic, which affected the whole world, we are back in business with renewed zeal and enthusiasm. I wish the organizers of this event success in the Conduct Ideas 2022 and look forward to an overwhelming participation from defense industries from inland and abroad. We would warmly welcome the foreign defense delegates and trade visitors to IDEA 2022 to be held in November this year after a gap of 4 years. I also congratulate all the defense-related as well as other business-associated community and media houses who have selected the mega event of international repute for participation and sponsorship. I thank you all. Pakistan, my